Okay. So पहले तो thank you यार for everyone for joining. तो मतलब this is my first ever session. थोड़ा सा nerves है, but मैंने as I said in my message, the idea is I'm gonna use you guys to make this to drive this session. But the why I like, as you all know, we started with the whole, like, we always start with why I chose these videos or why this topic. So I'll just give a little bit of a background there, right? And uh, I am new to this. I don't have all the answers. I'm learning as well. I know a lot of you guys may be a way ahead in that journey, or you guys are also new to it, but maybe we can learn from each other. But to give you context, why this? So I have struggled with my weight since childhood, let's say, being born in a Punjabi family and in general in Indian families, you know, that concept of अच्छा नानी के घर जाएंगे, you eat a lot, इतने आम खाएंगे, ये वो and all that. So there is not really a concept of uh, you know too much about like health and all that in bachpan in childhood, which it it adds up when you realize it later on, right? So I mean, I have played sports over the years and everything, but I've struggled with weight. उसकी वजह से बुली भी होते हैं, मतलब as you know चाइल्डहुड में कमेंट्स भी पास होते हैं, सब होता है, बट इट हैज बीन अ स्ट्रगल. सो या आई हैव, मतलब उसके चक्कर में व्हाट हैज हैपेंड इज आई डिड जिमिंग, कभी कुछ ट्राई किया, यू सी ऑल दिस अमाउंट, लाइक द अमाउंट ऑफ मार्केटिंग दैट गोज ऑन, की वेट लॉस इन दिस period of time, weight loss in that period of time, but it is it never worked out. Like, it may work out for a short period of time, but it's never sustainable. But this time, because of this group here, like, we started the whole accountability buddies, and I thought, no, this time I want to do it much more scientifically. Like, always I used to do it कि हाँ, जोश में होश खोलने वाली बात करता था मैं, right? Like, you hit the gym 1 month, I'll do crazy gym, I'll try to do some kind of a diet, and suddenly, and that is never sustainable. But this time, the reason I chose this topic and these videos was because I want to do it a little bit more scientifically. Having said that, I am new to this. I've not gone through some detailed things like Huberman and all that, all those podcasts. I have read very basic stuff. I have seen very basic, like, reels aati rehti hain and all that. But let me give you a gist of what I have understood, mota mota, the crux of it, right? From whatever limited I have read or seen in the past 2 months for that matter. And then what I'm going to do is I'm going to open this floor, floor to questions. I've actually sent posed that question to each one of you, that what health means to you, what has worked for you, and what has not worked for you. And I'm hoping each one of us will be sharing something, and we'll actually get to learn from each other, right? So basically, the crux, what I have understood from everything that I have read till now, is there is a difference between weight loss versus fat loss. Anything that says weight loss, I think that is wrong. Weight is just a number. Okay, what you need to do is not exactly weight loss, but fat loss, right? And I'll tell you basically why I'm saying this, right? So basically, in your body, there is two kind of mass. That is your fat mass and fat-free mass, right? Fat-free mass is what you call your lean body mass, which has everything else, ki bones ka mass, water mass, organs ka mass, blood ka mass, whatever. That is all your fat-free mass, and fat mass is basically the excessive fat that gets deposited in your body, right? It's the excess body weight which your body basically has stored in, because, and that is the reason you go out of shape, and which is the biggest reason for diseases, right? Now, what you need to do is fat loss, not weight loss. Weight loss is just a byproduct, right? And you will lose weight, but you have to lose the right weight and in the right way, which is by basically burning that fat, right? So, but now the crux of it is, now the thing is, all those diets and everything that do, what the problem with that is only focusing on fat loss, the fat mass loss. At the same time, you have to maintain muscle, because your toning, is basically, or your strength is basically while maintaining that muscle mass. That is a part of the fat free mass. So the basically crux of it is
You lose your fat mass while either maintaining your muscle mass or increasing your muscle mass if possible. Now, that is real, uh, weight loss program, I would say, per se. That is what needs to be done. Now, what happens is all these diets, right? All these detoxing diet, keto diets, and all that, they are saying, okay, you lose weight, suddenly you'll see their weight go down. But as I said, that is you're losing muscle weight. You're not necessarily just losing fat weight. And the problem is these diets are not sustainable. Uh, I mean, कितना time होगा कि आप like you'll starve yourself and all that. These are not sustainable. That is why what is important is consistency, right? Now the other thing is it is all based on one single law of conservation of energy. Basically, your body में क्या है, like all the energy that is coming in is via the food you eat, whereas your for जो outlet है उसका, that is from four kinds of like outlets. एक होता है energy that is being burned when you are at rest, like let's say even when you are sleeping, there is energy being consumed by your body to run your body, like to for your heart to beat and everything, which is called basal, like if I talk about technicality, it's called BMR, which is called basal metabolic rate, right? Then there is your energy that is spent like doing, like if I'm doing hand gestures and all these things, right? This is called something called non-exercise activity thermogenesis, नीट कहते हैं इसको, ठीक है? Like आपने scratch किया nose, उठे, that is one. And the other is if you go to the gym या आपने you do a like exercise. So these are your outlets. अब law of conservation of energy simple है कि basically जित आपकी एनर्जी can neither be created not मतलब destroyed, right? It is just getting converted and stored into another form. So basically पूरा crux of weight loss or fat loss and something is आपको अपना calorie deficit कम करना है. आपको energy जो आप consume कर रहे हो और जो burn कर रहे हो उसका difference, that is the whole crux of it, right? अब उसके अंदर, अब मैं बोलता हूँ अगर आप उसके अंदर बर्गर भी खा रहे हो, चाहे सिर्फ अगर आपको लेट्स से आपकी कैलोरी इनटेक रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इज जस्ट अज्यूमिंग 2000 कैलोरीज फॉर द डे, एंड आप अपने पूरे एक मैकडोनल्ड्स का या जो भी दो मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा के या पिज्जा खा के जो आपको सिर्फ 1500 कैलोरी दे रहा है, आप डेफिशिट कर रहे हो, आपका उससे भी फैट लॉस हो जाएगा. बट वाई इज दैट नॉट sustain why is that not recommended is because you need your nutrients, right? So आपके basic three nutrient हो गए, carbohydrates, proteins and fats, right? But apart from that, you need your these are your macronutrients. Apart from that, you need your micronutrients also, which are your minerals and your vitamins and minerals. तो आप चाहे पूरा दिन एक पिज्जा खा के अगर आपका कैलोरी डेफिशिट हो रहा है, अभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, आप उससे भी कर लोगे फैट लॉस, बट यू आर नॉट गेटिंग योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन डी. एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, आई एम 100% श्योर अ लॉट ऑफ अस, इफ यू विल गेट अ चेकअप डन, a lot of us will be suffering from it just because we have our day jobs and we are in the house and everything, we are not used to going out, right? Or vitamin A deficiency, or that's why the while conservation of like the deficit of calorie needs to happen, at the same time it needs to happen with the correct amount of diet. So there is nothing like कि आप carbs नहीं खा सकते, आप fat नहीं खा सकते, आप junk food नहीं खा सकते. The crux of it is what I understood from everything is your diet need not have a fancy name, keto, detoxify, nothing. It is all about पूरा वो law of conservation of energy. Basically your calorie intake deficit create करना है. That is it. ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, मोटा मोटा इज व्हाट नीड्स टू बी डन. बट एट द सेम टाइम एज आई सेड कि उससे कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, बट व्हाई एक्सरसाइजिंग इज इंपॉर्टेंट is because of the other factors, as I said, कि आपको strength, आपको आपकी एजिलिटी, आप ओवर द लॉन्ग टर्म, लाइक आप ऐसे सोचो दो लोग हैं, दोनों 65 kgs के हैं, एंड एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, और एक बंदा नहीं कर रहा है, तो उसमें आगे जाके वो डिफरेंस आएगा कि वो जो एक बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है उसकी जो टोनिंग होगी वर्सेस जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है लेकिन उसका भी वेट सेम है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेट इज जस्ट अ नंबर, दैट इज व्हाई एक्सरसाइज is important. So that is
my monologue from this, like what I have understood, I know I don't know about intermittent fasting and all. I haven't read about that. I haven't gone into all those details. But this is what I have primarily understood. For me, what exercising or health, what defines for me is all about consistency. ठीक है? Like as they say in Japanese, Kaizen method, work on that incremental increase every day, right? It's fine अगर आपने एक दिन अपना calorie deficit नहीं किया पूरा, it's the whole the 12th fail movie की तरह restart, right? But and I'm not going into, I'm only talking about physical health today. I know health can also contain emotional health, mental health, and all that. I mean, we can go into those, but this is basically what I have understood. And now I'll open it to everybody. I'll throw an open question out there that, and you can obviously tell me that maybe my understanding of my limited reading is this wrong? Is this not the only thing? There is multiple things involved. Correct, you can tell me that. But the question out there is, what is health or exercise, what it means to you, what has worked for you, and what has not worked for you, right? So that is the question out there, and anybody can go for it. Sorry, too long a monologue, but yeah. Anyone, like what is it, like what is exercising, what is health to you, and what has worked for you in the past, what has not worked for you in the past? Yeah, what? Yeah. Yeah. So, Mary, what has worked is more than exercise. The diet has worked for me in case of fat loss. तो आफ्टर लॉकडाउन ऐसा हुआ था कि आई वाज अराउंड 95 केजीज और फैट परसेंटेज मेरा बहुत ज्यादा था एंड देन आई जस्ट लेफ्ट कार्बोहाइड्रेट्स द बैड कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैदा एंड इवन राइस तो दैट had I mean that had more contribution towards my fat loss क्योंकि मैं उस टाइम ज्यादा एक्सरसाइज तो करता नहीं था but still just on the basis of the diet I was able to lose a lot of fat percentage so yeah that has worked for me. Hmm. भाई मेरा तो काफी मतलब आई एम्पथाइज विथ यू सबसे पहले तो अनमोल एंड आई हैव बीन ओवरवेट सिंस बर्थ आई कैन से और काफी ज्यादा मतलब ऐसे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ओवरवेट हमेशा ही बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम हार्ट कंडीशन विच आई हैव सिंस चाइल्डहुड मुझे कार्डियो अलाउड नहीं है Hmm. तो आई कैनॉट डू कार्डियो मेडिकली so I use that as an excuse to not do anything now but uh, growing up my parents were very cautious about it तो उन्होंने कभी मुझे भगाया नहीं और खिलाया बहुत तो उसके वजह से और naturally at one point in time 4 years ago I hit my peak weight of 135 kgs very bad I was completely into depression whatever जो उसके वजह से आता है और मैंने जैसे बोला कि मुझे बॉडी शेमिंग तो घर से भी होती है मतलब बाहर से तो छोड़ दो घर से भी होती है मतलब बीवी बच्चे से लेके माँ बाप से लेके सबसे होती है बॉडी शेमिंग सो दैट यू हैव टू फेस इन योर लाइफ अनफॉर्चुनेटली तो वो तो होता ही है व्हाट वर्क फॉर मी वाज जैसे आपने बोला कैलोरी डेफिसिट इज द ओनली सस्टेनेबल थिंग विच यू कैन प्रैक्टिस जिसमें कि यू डोंट actually apply a lot of restrictions on what you should eat and what you should not. But at the same time, you become a little cautious कि भाई आज अगर मैंने पिज्जा खा लिया दोपहर में तो शाम को फिर से मुझे हेवी कुछ खाना नहीं है थोड़ा लाइट खा के या कुछ अलग तरह से लिक्विड डाइट पे सूप वूप पी के सो जाओ ऐसे टाइप्स
what worked for me was heavy lunch, light dinner with zero sugar. और जीरो शुगर मतलब एक साल मैंने ये ट्राई किया था, एंड बिकॉज आई रीच टू 135, आई लॉस्ट 30 kgs in 1 year, ओनली बिकॉज आई लेफ्ट शुगर 100%. मतलब मैंने भगवान का प्रसाद भी नहीं खाया, एक भी फ्रूट नहीं खाया, एक साल तक, एक सवा साल तक. आई डिड नॉट हैड even a spoonful of sugar in around 15 months. And the result of that was 30 kgs I lost straight away. So the biggest killer in our food is sugar, in my opinion. जो प्रोसेस्ड वाइट शुगर हम बोलते हैं, या जैगरी, जो भी आपको मतलब ये, सो जैगरी और हनी इज नॉट अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर वेट वॉचर्स. तो जैगरी, शुगर, हनी, ये सारा ही हानिकारक है. मतलब इवन फ्रूट्स, सो वाटरमेलन, एप्पल, गुआवा, जो जो भी मतलब आप कोई भी फ्रूट लो, फ्रुक्टोस से जो शुगर बनती है. सो आवर बॉडी इज इंटेलिजेंट. इफ इट इज क्रेविंग फॉर शुगर, इट विल ट्राई टू क्रिएट शुगर आउट ऑफ एवरीथिंग दैट यू ईट. तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है मतलब उससे. So that is something that worked for me. The other thing which was an eye opener for me was one of my friend actually runs a health startup in Pune, and I have one of his co-founder is a very good friend of mine. She is a doctor, very senior doctor, and I used to be very happy when I used to do my after weight reduction, when I did my pathology test और ये सब blood test और ये सब चीजें, तो I was very happy कि यार मेरे सारे पैरामीटर्स अभी रेंज में आ गए. Because my cholesterol, my LDL, HDL, ये पैरामीटर, वो पैरामीटर, everything was looking normal within the limits. But I knew internally it's I'm not within the limit, right? मतलब I'm still overweight largely. तो माय डॉक्टर एक्चुअली सैट एंड एक्सप्लेन कि ये जो पैरामीटर जैसे गाड़ियों का होता है कि ये गाड़ी 20 एवरेज देती है, तो वो एक्चुअल 20 एवरेज कभी नहीं देती गाड़ी जब आप चलाने लगते हो. तो जब आप चलाते हो तो आपके ड्राइविंग के हिसाब से, रोड के कंडीशन के हिसाब से, आप कौन से गियर में चला रहे हो, कितना स्लो चला रहे हो, फास्ट चला रहे हो, उसके हिसाब से वो एवरेज कभी कभी 10 भी आ जाता है. तो नन ऑफ दीज पैथोलॉजी टेस्ट आर एक्चुअली इंडिकेटर्स ऑफ योर हेल्थ. यू नीड टू डिग डीपर एंड you need to adjust the acceptable parameters, जो desirable values रहते हैं. जैसे अगर आपको बोला कि भाई LDL का वैल्यू लेस देन 30 होना चाहिए, so less than 30 is good for somebody who is already fit, yeah, have an average body type. For an unfit person, you should target less than 18, and in that case you are way above that limit, right? When my value used to come say 24, तो वो लेस देन 30 नॉर्मल पैथोलॉजी लैब के रिपोर्ट में आ गया, तो आई वाज हैप्पी. बट इट शुड बी अराउंड 18 अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ कंडीशन, क्योंकि ये 22 और 24 ऑल्सो पोजेस अ चांस फॉर अ कार्डियोवास्कुलर impact of that LDL value on me because of my body type. So ये करने के लिए you have to work with probably a doctor to get your desirable range. And हार्ट के लिए भी काफी अलग पैरामीटर्स होते हैं जो अपने नॉर्मली इसमें टेस्ट नहीं होते हैं हार्ट हेल्थ के लिए. सो विच आई एक्चुअली वेंट अहेड एंड डिड दैट. देन जो बोन डेंसिटी टेस्टिंग हम करते नहीं है. सो इफ यू आर अप्रोचिंग 30, आई वुड हाईली एडवाइज कि डेक्सा स्कैन कर लो आपके सिटी में जहाँ पे भी अवेलेबल है. DEXA scan will reveal those things to you which you will never would have imagined कि ऐसा भी है. एंड उससे दूसरी एक चीज जो काफी काम करती है इज नॉट स्टारवेशन बट दीक्षित डाइट. ये इसको पता होगा शायद सुमित को, या जो भी मतलब महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको पता होगा दीक्षित डाइट. सो व्हाट दीक्षित सेज इज डिसाइड 2 timings
and eat regularly on those 2 times. Eat whatever you want. There is no restriction. तो आपने छोले भटूरे खाए, समोसे खाए तो भी चलेगा, बट रोज 12 बजे और रात को 9 बजे, बस इतना ही खाओ. बीच का जो फूड है वो बंद कर दो. मतलब हम 12 बजे भी खाते हैं, फिर 2 बजे भी कुछ खाते हैं, फिर 4 बजे चाय पीते हैं, ये करते हैं. दैट इज समथिंग विच यू शुड अवॉइड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन विथ आवर लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम है उनको तो यार घर में तो 2 घंटे मुझे बोर हो गया तो हर 2 घंटे बाद मैं डब्बे खोलने लगता कि भाई आप ये डब्बे में क्या है, वो डब्बे में क्या है, या फ्रिज ओपन करो और देखो उसमें क्या है. The other thing, I think the biggest benefit of sleeping early is late night eating, because वो मेरा बंद हो गया जब से I started sleeping on time. And I would highly advise कि आप जितना जल्दी सो सको उतना आप वो लेट नाइट क्रेविंग्स के माया जाल से बाहर निकल पाओगे. But I again, as I said, that I am still beginning my journey. अभी 2 साल में मैंने 30 किलो कम किया है, अभी और 20 किलो कम करना है. But now I have gained 5 kilo back because I started sugar again. See, again I'm not eating sugar on daily basis, but थोड़ा बहुत भी जो मैंने चालू किया है कि बर्थडे का केक खाना मैंने चालू किया है, या फिर त्योहार का स्वीट खाना, भगवान का प्रसाद खाना चालू किया, तो 5 किलो वापस आ गया. So sugar is the deadliest thing, I would say. And try to avoid. हमारे सब्जियों में थोड़ी बहुत तो शुगर होती है वैसे भी, and that is good enough for us. अदरवाइज बाकी तो आपने जो बोला वो ठीक ही है, बट मेरा एडवाइस यही रहेगा कि भाई अगर आप शुगर बंद कर सको तो यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर वेट. नहीं, थैंक यू यशु जी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स टच किए. लाइक यू टॉक्ड अबाउट बॉडी शेमिंग, विच तो इज अपने आप में पूरा, लाइक वी कैन गो इनटू दैट रैबिट होल इन, लाइक सेकंड, एज यू राइटली मेंशन, लाइक डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि वो जर्नी डिफरेंट होगी. ठीक है, यू नीड टू नो योर ओन रियलिटी. लाइक डोंट ट्राई फॉर क्विक रिजल्ट्स. उसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि इट माइट शो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बट वो जैसे ही छूटेगा, like, and I think that happens with a lot of sportsmen. Like till the time they are playing, they are fit, but as soon as they've stopped playing, you will suddenly see them, gain weight and all that, because the not body is not used to that. Like it was used to something. Like that's why I also never, like, I personally don't believe in something that you have to devoid your body about of something. You need to control the amount of it. And as you rightly mentioned, I was thinking of coming to that, like how important is it to sometimes see a specialist? Like if somebody has worked with a nutritionist or somebody, like to know your own metabolism. I know there are people जो इतना हमसे ज्यादा खाते हैं और उनका पच जाता है. मैं पानी पीता हूँ, मेरा ब्लोटिंग हो जाती है. ठीक है, तो इट इज, दैट इज देयर, बट लाइक वील कम टू दैट. ये जो आपने इतनी सारी चीजें बोली, आई आई वेट फॉर समबडी एल्स आल्सो टू शेयर. एनीबडी हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? क्या मेरा भी ऐसा ही कुछ मोनोलॉग ही होगा. लाइक आई हैव बीन थ्रू द सेम थिंग. वही बचपन से फैट किड सिंस आई वाज अ चाइल्ड. और ये शेट्टी फैमिलीज में बहुत होता है कि फर्स्ट टाइम एनीवन सीज यू दे कमेंट ऑन, अरे तू मोटा हो गया, अरे तू पतला हो गया. लाइक इट्स, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया नो वैसे नो, दैट्स पूरा. इंडियन थिंग, दैट्स एन इंडियन हाँ. थिंग. तो दैट वाज वन थिंग. तो बचपन से माय पेरेंट्स ट्राई टू पुट मी इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज. मैं कराटे में भेज दिया मुझे, जिम भेज दिया बचपन में. हाँ, जिम भेज दिया. और मैं आता था 10 दिन बाद वापस आता था, कुछ हो रहा नहीं मुझसे. मैं आरएसएस में गया हूँ टू प्ले, शाखा में गया हूँ. द वन दैट स्टक वाज अनदर काइंड ऑफ अ माइल्डर काइंड ऑफ अ शाखा विच हैज, उसको ज्ञान प्रबोधिनी बोलते हैं. सो एवरी डे आई यूज्ड टू गो प्ले देयर. बट वहां पे भी कुछ वेट लॉस ऐसा हुआ नहीं, तो तभी तो वेट लॉस ही था कंसेप्ट. आफ्टर कॉलेज आई रेड टिम फेरिस का 4 Hour Body. फ्रॉम देयर आई गॉट स्लो कार्ब डाइट क्या होता है. तो इन दैट देयर आर 5 बेसिक रूल्स. वो तो गूगल कर लेना क्या है उसका. इट इज द वन दैट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फॉर
the long term after I lose the current weight, the current goal weight that I'm aiming for. Slow carb के बाद I did keto and I lost around 20 kgs doing that. 100 पे मेरा max weight 100 है, तो 100 के ऊपर नहीं गया. तो after that I lost around 22 kgs. 78 पे आया था. That's the lowest I've been. फिर उसके बाद वो छोड़ा and then around लॉकडाउन मैंने वो छोड़ा था. तो उसके बाद वापस बढ़ गया. Again I reached 100. Now again I'm back 8 kgs after doing keto again. So what I've learned is keto is great for you to get to a certain goal weight. उसके बाद it is not sustainable in the long term, I feel. What I've realized is I feel much better when I'm off carbs. Carbs मैं कुछ भी carbs खा लूँ, like रोटी, rice is ठीक है. Rice works better for my body than roti, pav, bread, anything. But wheat gluten is worst for me. Not gluten, wheat gluten और उसका carb part is different. So even if in keto diet I can add gluten, but not the carbs of here. So I feel much better when I'm off carbs, off sugar. Sugar totally banned. Even I've recent research है कि fructose is like how glucose stores and then converts into fat. Fructose doesn't store in your body. It doesn't get stored in your body. It directly converts into fats. There is no middle ground. So fruits are modern fruits, because modern fruits are engineered to taste very well, but still better than eating direct sugar. So I've got I stop everything, and my problem is being a fat kid. I eat everything that's in my sight. कुछ भी खा लूँ. मेरा joke था कि I am on a seafood diet. If I see food, I eat it. So, so I'll eat everything, anything and everything. It doesn't matter what kind of food is in front of me. So it's mainly for my self-control. I'm better with a cold turkey diet, cold turkey thing. Like I cut everything off, and I get to make my own food also. I eat 2 times a day, lunch and dinner. But breakfast, no breakfast. I skip breakfast entirely. Intermittent fasting also, yes, I've done. I do intermittent fasting 16 hours, 18 hours every day, which I think ho jata hai. Max I've done is 36 hours. And food is, and you realize you don't need food that much for energy. It's mostly for the pleasure sensors that you feel. So you can eat horrible food and still survive, but वो ये नहीं होता. It's not satisfying to you as a person. So you have to get out of that mentality every once in a while to just live in the world. So going forward, I would like to continue no carb and take breaks. Like I told, the prime example of my no control is आज full day बीमार था मैं, so I had to eat घर का दाल चावल, and I was like आज टूट ही गया है, तो बाहर समोसा और जलेबी खा लिया मैंने. Like I'm that kind of a guy, so I need total lockdown of my input. बस वो कीटो के बारे में और कुछ जानना रहेगा तो why it works, if it even works. Like you put detox and keto in the same thing, right? So I agree with most of your points, what you said वहाँ पे. But keto and detox is a horrible thing. Don't ever do it. They're trying to flush toxins out of your body, which the body normally does. Toxins are urine and feces and sweat. That's the normal definition of toxin. Detox is a fad. It's not even a diet. I won't even call it a diet. Keto mein what happens is you induce a state of starvation in the body. Okay. Best way to get into ketosis is through fasting. मतलब कुछ खाओ ही नहीं तो body shifts to ketosis for energy. Body shifts to ketosis and uses your fat for energy directly, stored fats for energy. So best way to do it is to go into starvation. But the hack to get in, if you don't want to do fasting, so better way is to go into
high fat, moderate protein, and low carb diet. But even that I cheat. I do a dirty keto. I don't do for 20 grams. उतना ही होता है. And it works for me. So I plan to do it long term with cheats in the middle. My question to like even you or Vishweshji is very firstly is कि I think the keto and all will only work, let's say if you're not working out, because then तो energy बचेगी ही नहीं, नहीं right? नहीं, it works. I've done after 24 hours fast. I've done 100 kg का deadlift किया है. It works really well. Especially if you're working out. When you're getting Okay. into it, there's a hard transition phase when you're getting Hmm. into ketosis. कि तुम्हें continuous ये रखना है, hydrated रहना है. You have to go on a long walk when you're getting into it. Long walks when you're getting into it. But workouts, there are few. Kelly Starrett hai, even Peter Attia, Dominic D'Agostino. These guys are highest performers in their own field, and they advocate uh, this low carb kind of lifestyle along with working out. So I'm just saying, do your own research in इस महीने में, and these books help me. Just show them. Yeah. ये मसाला लैब इंडियन जनरल इंडियन साइंस के लिए 4-hour body and 4-hour chef, same Parisha. These are the 4-hour body, I think, helped me the most to get it started. Then I did my own things, and बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से I modified it to my thing. And supplements का बात करना है तो अब बाद में अपन कर सकते हैं उसका. हाँ, I'll come to supplements. Yeah. उसका एक there is a pyramid and the marketing of that pyramid is done reverse, जबकि supplements is the cherry of that pyramid. I'll come Yeah. to that. But there was one point you made, Sumit, ki you make your own food. I'll share an anecdote here. So that 6 months of lockdown, okay, March to almost whatever that 6 months. So I was like working out मतलब cult world वो dance fitness and all that walk करने जा रहा था. It was not I was not controlling the amount of food I was having. I was having proper अपना खाना. But the only difference in those 6 months, I did not have anything from outside. कोई restaurant से नहीं. पिज्जा भी अगर खाना है तो द बेस वाज बीइंग मेड एट होम. ठीक है, लग रही थी उस पे सॉस, सब हो रहा था, ऐसे वी वर गेटिंग नमकीन्स लाइक आलू भुजिया एंड ऑल दैट, बट देयर वाज नो रेस्टोरेंट फूड फॉर 6 months. That worked wonders. So just like I think it is that outside food, the the amount of calories, the oil and all that is there just for 6 months. Simple, normal, apna day to day like workout and all. Not even workout. I was not lifting weights or anything. I was doing cycling. I was doing running, Zumba and all. But just because I did not have a Zomato and Swiggy for those 6 months, anything I needed was being made at home. Even momos were being made at home. It made all the difference for some reason. So that really helps. My question to before we go into anyone is somebody who's been used to eating sweets since bachpan, right? Or we are used to eating like so in Punjabi meals, and I think Dijit bhai will know, we have a lot of like our quantity of dal sabji is a little bit more. Like we tend to have हम पूरी कटोरी भर के खाते हैं, ठीक है, हमें वो बचपन में कहते हैं ना खाते पीते खानदान के टाइप्स, वो हम बोला जाता है. somebody who's been used to that, ठीक है, suddenly you are saying कि अब और मतलब मीठा खाना ही है उसके बाद खाने के बाद कुछ एक मीठी चीज. How is it that you like, is it just your like you have trained your mind, or like how difficult is it to give it up? मतलब literally you are saying like Vishweji also said कि मैंने शुगर बंद कर दी, राइट, और मैं बिल्कुल ही शुगर बंद कर दी. मतलब हाउ इज इट, मतलब मुझसे तो वो होता ही नहीं कि कैसे कर लूंगा यार मैं ये चीज कि मेरे बंद ही कर दूंगा. तो आई एम आस्किंग कि कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है, लाइक व्हाट हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड? लाइक आई एम प्रीटी श्योर स्टार्टिंग में तो मुश्किल होगा ना, 25 साल से खा रहे हैं हम मिठाई. For me, replacements were easier. Like स्टीविया का टेस्ट खराब लगता है स्टार्टिंग में, लाइक उसका आफ्टर टेस्ट भी थोड़ा कड़वा है, बट स्टीविया इज अ गुड शुगर रिप्लेसमेंट. आई ईट डार्क चॉकलेट, वो 100% शुगर फ्री वाले डार्क चॉकलेट्स है ना, those I really like I like them better than normal chocolates now.
because I'm used to eating it now. So as a replacement, I eat that. And also probably Indian sweets के लिए और in general sweets के लिए I didn't have a sweet tooth, sweet tooth. Like मुझे ऐसा ही नहीं था कि चाहिए. I always had a banana after dinner or any fruit. So fruits were harder for me to cut out. So yeah, But so do you not need to cut out fruits? Because then we have always been told you get your minerals, vitamins from fruits. I mean, I'm not saying eat mangoes, matlab, but mangoes uh, actually better रहेंगे. so which fruit are you saying cutting out? I don't know. I haven't delved Okay, into it okay. वैसा. Which But Vijay, maybe fruits you में know? berries हाँ are हाँ. the best in general So any of the fruit fruits. which is basically seasonal is good. तो वो सीजन के लिए बने हुए जो फ्रूट्स है ना वही खाओ. बनाना तो सबसे पहले छोड़ दो क्योंकि सब बनानास अपने यहाँ पे नेचुरल मिलते ही नहीं यार. दे आर ऑल लाइक Original bananas कार्बाइड. had seeds in them, तो वो कभी तुम्हें मिलेंगे भी नहीं. हाँ, अनलेस यू आर इम्पोर्टिंग बनानास फ्रॉम हम्पी या कहीं से. तो Hmm. बनानास तो छोड़ ही दो. एप्पल्स छोड़ दो बिकॉज एप्पल सब ग्रीन हाउस से आते हैं. कोई कश्मीर एप्पल को भी नहीं बेचता है अपने यहाँ. वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं 100%. तो हमें जो एप्पल्स बेचते हैं, हमें जो बनानास बेचते हैं, हमें जो ग्रेप्स आते हैं, दे आर ऑल ग्रीन हाउस ग्रोन, लैब ग्रोन बोल सकते हो उनको. तो वो बट एनी सीजनल फ्रूट इज गुड. एनी फ्रूट विच हैज लाइक lesser shelf life you should avoid. एज इन जो जल्दी ज्यादा पक जाता है ना, Hmm. ऐसे फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए. जैसे चीकू हो गया, वो एकदम से पक जाते हैं. तो जितने आप कच्चे फ्रूट खा सको उतना बेटर है. तो आम भी मतलब कच्चे आम आप जितने चाहिए उतने खाओ, कोई इशू नहीं. शुगर बहुत कम है कंटेंट. I didn't know this. Nice. बट ईट सीजनल फ्रूट्स. दैट्स व्हाट Hmm. माय लर्निंग वाज आल्सो. मैंने एक साल फ्रूट्स छोड़ा बट देन माय डॉक्टर सेड कि अरे सीजनल फ्रूट्स बिंदास खाओ, कोई इशू नहीं. बट राइप मत खाओ. राइप से एक स्टेज पहले वाला खाओ. Also, there's a question, Nandini ka question hai, so maybe you can answer. Like, please talk about what happens when you stop keto. Keto is I how many days? Is it some number of days, It's or just it's up I till did it whenever you for want? 6 months Oh, पहले. 6 months. Okay. Yeah, advisable is 3 months, but I was feeling better. Even I checked my blood markers before and after, they were all right. So I continued doing it. And the fact is, when I stop it, if I immediately go into a full carb thing, like ऐसा roti and everything, if I'm peeling and ice cream ऐसा खा रहा हूँ, then I feel horrible the next day. But then I ease into it. A human body is uh, strong enough to ease into it. And what convinced me to get into keto was the Paleolithic diet, suna? I don't know what it. So paleo is a precursor to what keto is. Keto is Okay. thoda a hardcore version. What I do is probably paleo. Paleo diet is how humans lived before the advent of agriculture. So mostly we foraged, we hunted. Yeah. So mostly there were hardly any carbs. All carbs we had Correct. were from Hmm. vegetables we foraged. There were no grains as such. Meat, eggs, that that kind of that kind of a diet. So why I was convinced to do it, nobody convinced me. It was just my Yeah. reading. I was like, humans lived for hundreds of thousands of years on that, and just because we had to settle in one place, we cultivated agriculture and our diet became more carb focused. And even then, we were healthy enough until the advent of industrial age, because वहां तक तो at least अपन इंडिया में I think it was from a Chris Ashokri also I saw कि we had a breakfast in the morning, we had heavy breakfast in the morning, then we worked the whole day and we had रात का 6:30 बजे का खाना. That's it.
that was when your glucose spiked. There's also glucose spike hota hai. You have to control that also, but for simplicity's sake, you don't have to think about all of these things when you're actually uh, trying to control your eating habits. That नहीं बोलूंगा because people are scared of the word diet, but just regulating your eating habits, Hmm. regulating when you eat. Uh, so even back then, nasta, physical labor, and dinner, and they didn't control what they ate, or they ate till they were hungry, till they were not hungry. And I think uh, Jigarjeet कर रहा था ये. He did not eat till he was full. मतलब अपना कैसा है कि 80% तक ही हाँ हाँ, there's this bec- yeah, it's a it Japanese takes concept. time. Yeah. It takes time to settle in your stomach. Yeah. Mostly carbs का ही problem है वो. Carbs take time to open up in your stomach. So it takes time for you to full, and then you feel horrible बाद में. इसलिए पुदीनारा और हजमोला बहुत बिकता है इंडिया में. That's the reason. Yeah. Yeah. One So other thing what you can yeah. do which is very beneficial, जो मैं मतलब हर 3 महीने में एक बार करता हूँ, कि यूज अ CGM. सो CGM क्या करता है कि विच इज अ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, Glucose monitor. जो छोटा सा, Hmm. जो अपने ये Yeah. क्रिकेट प्लेयर सारे पहनते हैं ना आर्म पर, तो छोटा सा डिवाइस होता है विच बेसिकली कंटिन्यूसली मेजर्स योर शुगर 24/7. तो वो 15 दिन उसका लाइफ होता है, तो 15 दिन के लिए करता है. ये रूटीन में पहनना है, ना कि कुछ स्पेशल आप बीमार वगैरह हो या कुछ हो उसके लिए. ये रूटीन में पहनना है. यू फॉलो योर बेसिक रूटीन जो आप अदरवाइज फॉलो करते हो. वीकेंड को बाहर का खा रहे हो या शाम को बाहर का खा रहे हो, जो भी करो सब करो, बट इट गिव्स यू अ ग्रेट इंसाइट इनटू व्हाट कॉजेस योर ब्लड शुगर टू स्पाइक. फॉर एग्जांपल, कई लोगों का ऐसा है कि भाई वाइट ब्रेड से शुगर स्पाइक नहीं होता, ब्राउन ब्रेड से होता है. मेरे केस में फॉर एग्जांपल पीनट बटर ब्राउन खाया ब्रेड तो व्हाइट ब्रेड ही शुगर. होता है मोस्टली, इसलिए. हाँ, बट मतलब ऐसे अलग अलग इंसाइट्स आपको पता चल जाते हैं कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर टाइप का दाल खाया तो शुगर स्पाइक हो रहा है, कोई पर्टिकुलर मतलब मसूर या मूंग खाया तो नहीं हो रहा है, तुअर का दाल खाया तो हो रहा है. तो यू गेट ऑल दीज वेरी गुड इंसाइट्स, देन यू कैन फाइन ट्यून कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है बिकॉज इट इज कॉजिंग अ ह्यूज शुगर स्पाइक. I I also think think कि when you start getting conscious about it, you start to read correct. backs of packets more. कि उसमें I always read कि कितना कार्ब है. मोस्टली शुगर कंटेंट देखता हूँ मैं, और एडेड शुगर देखता हूँ. कुछ ज्यादा ही रहे तो Yeah. रख ही देता हूँ वहाँ पे. So I was just gonna say कि like what gym helps me to do is also कि when I've burnt that calorie and come from the gym, जब मुझे वो एक एक सेकंड पता चल रहा है जिम वाला, so it is becomes difficult for me to come back and consume also suddenly. Now I'm become more conscious because now I know the pain that I went through in that gym just to like burn that 100 calories, and suddenly I see यार ये इसमें में 200 कैलोरी है तो मेरा दिन बराबर हो गया. So suddenly you're just more conscious, as you said कि you'll start looking into things a little bit more. So that way I think once you start exercising or something, you become more conscious, and suddenly you won't feel like eating those things. You will try to start looking for substitutes maybe for to replace that thing. But anybody else who wants to share what has worked for them, and like, or what has not worked for them in the past. मेरा छोटा सा स्टोरी है, मैं बोल देता हाँ. हूँ. मतलब मेरा क्या, सो आई डोंट हैव एनी स्टोरी फ्रॉम चाइल्डहुड और एनीथिंग, बिकॉज मतलब माय स्ट्रगल्स विद वेट एंड ऑल दैट जो भी हैं वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं. मतलब एंड दैट लीड्स मी टू बिलीव कि इट हैज़ अ लॉट टू डू विद, आई थिंक, जैसे ही बाहर निकला, अकाउंट में पैसा आया और सारे डिसीजंस जब मेरे पास थे, तो वो बहुत मैजिकल लगता है शुरुआत में, दैट यू कैन जस्ट Correct. पापा से भी ना पूछे, मम्मा से भी ना पूछे, यू कैन जस्ट ऑर्डर योर शिट दैट ट्रिपल शेजवान राइस खाएगा मैं आज 12:30 बजे, है ना. तो
सो ऐसा कुछ नहीं है कि खाना ज्यादा चालू किया या समथिंग, बट दैट लाइफस्टाइल चेंज दैट हैपेंड बड़ी सिटी में आके whatever that, and I'm luckily I have no affinity इतना for sweets or whatever. My kryptonite is I mean sweet also in a way, but my kryptonite is आलू भुजिया, चीज में कुछ भी डुबो के मेरे को दे दो, है ना, तो मेरा क्रिप्टोनाइट वो है ज्यादा. तो what started happening was obviously, and the sedentary lifestyles that we lead लेड टू सडनली, मतलब टमी इतना बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट टाइप से, जिसको बोलते हैं दैट, जिसको बियर बेली बोल सकते हैं, वैसे टाइप का चालू हो गया था. एंड इट लुक्ड वेरी ऑड बिकॉज द अदर थिंग्स एटलीस्ट प्रपोर्शन में हो तो, यू नो, मतलब इट बिकेम अ थिंग अबाउट दैट, यू नो, दैट क्या 30s के बाद जो सो, and what happened was, I started seeing that my metabolism is also going to shit, or and it was like anything that I ate, I used to, you know, go through the repercussions much more after 30, or the lifestyles are very bad, obviously, right? So what has helped for me now is, और मैंने कोई भी diet, and I have not delved into it much because again, this is not a lifelong struggle for me. तो इट इज़ वेरी न्यू फॉर मी, एंड मेरे को समझ में भी नहीं आता जब व्हेन समबडी ट्राइज टू शेम यू इन अ वे. सो आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस. सो द ओनली थिंग दैट आई हैव डन रिसेंटली नाउ इज कि बिकॉज आई हैव नो स्ट्रगल्स लीविंग स्वीट्स, मतलब उतना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, फिर भी खाते तो थे ही आप थोड़ा बहुत, मतलब, तो आई हैव कम्प्लीटली लेफ्ट इट, मतलब बिकॉज इट्स इजियर फॉर मी, तो मैंने फिर सोचा कि पूरा ही कर दिया जाए, मतलब उतना भी क्यों किया जाए. तो दैट हैज थोड़ा सा, मतलब मैं इससे भी ज्यादा, I had a much bigger tummy when I was in America, I think. तो वो थोड़ा कम हुआ है. Then I've left, I'm trying to leave caffeine completely. और just the basic inquiry कि मैं जब कुछ खा रहा हूँ, when I'm putting it something in my mouth, तो क्यों खा रहा हूँ? That when I've started, and when I've started spacing out the meals, that has worked like wonders. मतलब पहले ऐसा होता था कि ये क्वेश्चन भी नहीं होता था मेरी लाइफ में कि मतलब डू आई रियली नीड टू ईट दिस राइट नाउ. डू मतलब अगर मैं आलू भुजिया का एक पैकेट पूरा खा रहा हूँ in a matter of 30 minutes, so there was no question that I used to ask myself, क्यों क्यों नहीं खाऊं मैं, right? So yeah, it was stupid things like that. And one more thing, कि I have noticed that whatever health jeopardy that I go into ever, जब भी एकदम से, and my body fluctuates a lot ना, by the way, तो एकदम कम होता है और एकदम ज्यादा भी होता है. तो it is always when I'm going through some kind of anxiety. So like Monica Geller, I am actually looking for love in those cookies. So it's very real for me. And the moment I start being a little chill, a less ambitious, or, you know, सब chill हो जाएगा, then I'm able to cut down on my eating also. So again, no fan, you know, no diets I've read into, nothing I've delved into. Just these simple things have worked for me. बस अब सारा मेरे साथ चक्कर ये है कि how much can I continue this. But also एक चीज जो मैं सिर्फ एक बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि एज अ फैमिली हम सबकी आइडेंटिटी भी वैसी हमको बदलनी चाहिए, बिकॉज इन इंडिया फूड इज नॉट फ्यूल, फूड इज अ वे ऑफ लिविंग ना. तो हम सब ऐसे फैमिली से आते हैं, मुझे लगता है, जिसमें मतलब इवन मैं पापा अपने फैमिली को भी जब मैं बोलता हूँ कि फूड ये छोड़ दो या कुछ भी कर लो या मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो इट्स बिकम्स एन एक्ट ऑफ रिवोल्यूशन विच इज रियली सैड. मतलब इट्स लाइक बाकी जगह, हर जगह देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, बट फूड में आप किसी को मना नहीं कर सकते ना. बेटे को ये कैसे बोल दें कि कम खा ले, ये मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा. सो ऑल द कंजर्वेटिव थिंग्स का सारा लोड हमारे यहाँ फूड उठा रहा है कि ठीक है तू ये नहीं कर सकती लड़की, बट ये तू कर, ये सब बहुत कर सकती है. एंड सिमिलर फॉर एवरीवन, लाइक, सो या, आई मीन आई डोंट नो हाउ मच सेंस आई मेड, बट दैट्स माय नहीं नहीं, स्टोरी. तो टोटली आप जो कह रहे हो, दिस इज अ रीसेंट फिनोमेना. द रीजन फॉर दैट इज स्विगी, जोमेटो, नेटफ्लिक्स. हाँ. ठीक है. बिकॉज टिल देन, लाइक, वी आर 90s किड्स, तो मतलब आई एम 90s किड्स, तो मुझे याद है टेक आउट मेन्यू आते थे. तो एक पूरा, कब ऑर्डर हो रहा है तो अच्छा, वो पूरे घर पे उस दिन डिनर वो पहले से पता है कि ऑर्डर होगा. ऐसा नहीं है कि अब मैं रात को बैठ के स्विगी जोमेटो कर लूंगा, मैं नेट बिंज वॉच कर. कुछ बिंज वॉच तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. आप बैठ के फैमिली के साथ मूवी देख रहे हो, डिनर कर रहे हो और खत्म. ठीक है. Correct. अब
अच्छा भाई ये शो बहुत सही है, पूरी पूरी रात जग के अच्छा यार कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बिकॉज इट इज एट अ क्लिक अवे, इट्स क्लिक अवे, लिटरली इट्स क्लिक अवे। ठीक है, तो इट इज अ रीसेंट फिनोमेना, द Also, अदर। हाँ। even the much well-to-do people, also and us of course, मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फूड को ऐसे भी देखते हैं कि अभी मैं जितना भी चाहता हूँ खा सकता हूँ, पता है क्या? अरे मतलब वो टाइम खत्म हो गया भाई, जब फूड के लाले थे, वो 100 साल पीछे छूट गया। अब दिस शुड नॉट बी, मतलब आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन द मेंटल सोशल वाला भी चीज कि फूड बिकम्स सो मच, और हर सारे सेलिब्रेशन का हमारे पार्ट है, मतलब एवरीथिंग, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि इफ तुमने घटिया अनहेल्दी फूड बट फुल ऑफ टेस्ट एंड कलर नहीं खाया, तो फिर तुम्हारा सेलिब्रेशन पूरा नहीं है। थिंग्स लाइक दैट, राइट? इट इज ऑल्सो अबाउट प्रेशर, जो आप कह रहे हो कि आप किसी के हाँ, घर गए, किसी के हाँ, रिलेटिव्स या किसी के, एंड यू आर डन विद योर कि इतना हो गया, बट अगर आपने उनको मना कर दिया नहीं मैं नहीं करेक्ट, खाऊंगा, इट इज करेक्ट, ऑल्सो अबाउट दैट यस, सोसाइटल थिंग, इज ऑल्सो प्रेशर्स आर देयर। अरे आपने कुछ खाया ही नहीं, हाँ। मजा ही नहीं आया, अरे तो मजा ही नहीं आया, अरे मतलब ये सब, मतलब अभी ये सब बहुत ऐसा लगने लगा जैसे alcohol, the substances and everything is socially being at least frowned upon. But so for my father's example, and I can give that example. He used to have 10 to 15 cups of tea on in a day. But if we would have been having 10 to 15 cigarettes a day, that would have been frowned upon. बट चाय का वैसा नहीं था। सो आई एम सेइंग कि हम हमको ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है कि दादाजी के टाइम पे तो 15-15 मिठाइयाँ खा जाते थे। अरे बट क्यों खाते थे? सो इट्स नॉट फ्राउंड अपॉन, राइट? मतलब बाकी अगर इसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल में लाएं तो देन मे बी वो एज इसलिए खा भी सकते थे बिकॉज आई दे हैव आर सीन आल्सो इज वर्किंग अ लॉट। they were working a lot, they had jobs which required them to get out of the house, not only करेक्ट, jobs let's say, but even today our parents are more comfortable going to the market to get vegetable or करेक्ट, anything from the kirana shop, ट्रू, बट वी आर लाइक कि अगर नीचे भी दुकान होगी भाई, तू जोमेटो तो वो डिलीवरी कर दे, तू ब्लिंकिट कर आ दे जा, भाई। करेक्ट, पीपल आर मोर दिस थिंग कि मेरे साल के ब्लिंकिट ऑर्डर्स कितने खाए हैं भाई, उस पे मतलब वी आर एक्चुअली celebrating that in a राइट, way, so it is also about that thing, या, but it is also to do with, I think their diets were better. Now I think the diets or the food that has become coming so processed, हम्म, and for that matter the vegetables and all that, वो उस पे इतना पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दैट करके मतलब सब कुछ इतना प्रोसेस्ड खाना इतना आ गया है। जो वो लोग खाते थे दोस्तों, लाइक घर पे चीजें बन रही है, मतलब देसी घी बन रहा है, घर पे बन रहा है, चाहे वो हाई इन फैट हो, हाई इन कैलोरिफिक वैल्यू हो चीजें, बट इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ डाइट दैट दे वर हैविंग। एंड ऑल्सो आई लाइक टू ऐड हियर, देयर इज दिस मिसकंसेप्शन कि आप सुबह का दिन का 1 घंटा जिम चले गए तो आपका हो गया दिन का वर्कआउट। हम्म, नहीं, योर there should be movement throughout the day. हाँ, Like what happens is you think, yeah, I have done my 1.5 hour of gym and now I can sit in front of the अब laptop full day. हम्म, No, that is not the thing. And another myth what I read was कि you think मेरे दिन के 10,000 steps हो जाएंगे तो it's done. No, it needs to be done in a specific interval of time. There needs to be a high intensity kind of a thing. Uh, बीइंग डन, इट्स नॉट लाइक आपने पूरे दिन के अंदर स्प्रेड करके इतने इतने थोड़े थोड़े चल के 10,000 कर लिए, उससे कुछ होगा नहीं। सो हम्म, इट इज अ कंटिन्यूअस फुल डे एफर्ट, लाइक यू डू दैट लाइक कॉन्शियसली कि 25 मिनट्स काम किया फिर 5 मिनट उठ के गए। हम्म, सो दैट इज नॉट हैपनिंग इन आवर केस। हमें लगता है मेरा सुबह का जिम हुआ भाई, अब मैं कुछ भी पेल के खा सकता हूँ, अब मैं हम्म, सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नो, दैट इज नॉट इट, दैट इज गुड, बट वो well, I mean, you need to be moving throughout the day. हम्म, Second, I am not sure how true this is. I had read somewhere, if somebody has knows about this, they say that if you eat while looking at a screen, हम्म, you don't feel full, basically. हम्म, You tend to eat more. keeps going, हाँ, हम्म, आई मतलब कहीं पढ़ा था मुझे, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज, एंड वी आर ऑल यूज टू दैट कि भाई पहले तो एपिसोड सिलेक्ट होता है, खाना तो पहले साइड में होता है कि भाई देखना क्या है। तो ये बचपन में मम्मी बोलती थी, एंड सब जगह सब कल्चर्स में होगा कि पूरे चित्त के साथ खाना खाना चाहिए, एज इन रियली यू हैव टू बैठ के, नथिंग एल्स, मतलब मैं उस टाइम पे मैं वो कॉमिक्स लेके बैठता था
मोबाइल नहीं थे तो कॉमिक्स लेके मैं पढ़ने बैठा। आई थॉट कि आई एम बीइंग सच अ गुड रीडर कि मैं किताब से दूर नहीं हो सकता, बट आई यूज्ड टू बी पढ़ती थी मेरे को कि जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम, एंड आई थिंक दिस हैज टू डू विद दैट आल्सो कि मतलब वो बोलते हैं ना कि लगता नहीं है। उस टाइम पे तो हमको बीफ अप करने में लगी हुई थी ना मम्मियाँ उस टाइम, तो मैं ऐसा होता था एटलीस्ट। तो वो एक था कि कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, आई डोंट नो, बट या दिस इज लाइक दैट ओनली ना, कि you don't enjoy it, Yeah. you don't really know what is, so maybe there is no Your history. brain, I think, is focused on the thing that you're viewing, but it's not capturing ki you are actually eating and you're Maybe, feeling. Maybe it's not getting that. yep. So yeah, like anybody else wants to share? Anybody has any questions? I can share if Ah, there's sure, no sure. reason. Go ahead. तो या तो मेरा तो बचपन से वेट के साथ एक लव इट रिलेशनशिप रहा है. आई हैव बीन इन अ हेल्दियर एंड फैटर साइड सिंस चाइल्ड, सिंस, हाँ, बचपन में. ऑफ कोर्स बचपन के फोटोज देखता हूँ तो दैट इज व्हाट दे फेल्ट क्यूट, एंड लेटर मॉम एंड डैड ओनली स्टार्टेड फीलिंग कि अरे थोड़ा ज्यादा ही हाथ से बाहर निकल गया. बट देन आई वेंट टू हॉस्टल. हॉस्टल में कुछ खाने को नहीं, बहुत अच्छा खाने को नहीं मिलता था, तो बहुत पतला हो गया था. तो पतला हुआ तो वापस आया तो नेबर्स बोले कि अरे ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग हॉस्टल में कि इतना पतला हो गया है. तो देन जब फिर वापस पुट ऑन किया तो नेबर्स बोल रहे हैं अरे अभी क्या इतना वापस मोटा हो गया. सो पीपल हैड इश्यूज विद माय बॉडी टिल आई डिड इवन रियलाइज. सो दिस इज मी बीइंग इन 8th 9th स्टैंडर्ड. फिर 10th स्टैंडर्ड में आया तो तभी 2010 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो देर वॉज a football called Jabulani that was there. So my whole class used to call me Jabu because of it being being shaped like a football. Uh, Wow. and Been and there, I done that. and I enjoyed, and I just enjoyed that attention through the class. So it didn't seem like it was something out of place. Then I think scene with health has always been that. But what I came to recently realize is that 11th, 12th, and first year college, I started getting into a better shape because I started playing a lot of sport. Like I started playing lawn tennis. I was representing my district. I started playing states when I was in college first year. Then of course, a lot of shit happened in college. वो सब छूट गया. Then of course life went on. सब कुछ हुआ जो होना था. COVID happened. So I think I was somewhere in like my I entered COVID at some 103 kilos. COVID happened, and because I work as a freelancer, COVID hit me very bad because that was the first time in life where I had no work. I literally was like I had no work and I had no sense of how to go through this, and I had no support to go through it. So it hit me really hard. Like those 2 years, so I put on I think another 20-25 kgs. I had reached to about 120, which I've never seen that kind of weight. And by then I had switched off to the whole world only. Like after a point, my mom came to me in a plea of ki maybe you should look at yourself and get like hold of, may not be eating and get into good form of exercise. But तब तक इतना सुन लिया था तो मैं तो completely क्या बोलते हैं ये स्विच ऑफ ही हो गया था. मैं तो it was just like noise for me and I had stopped accepting what people are saying. Then I came to realize, yeah, so then it took me quite a lot of time. I had to get in therapy and shit like that. But 8 साल फिर mental health पे काम किया. I think 23 का whole year went into that and all of that. But I think month of December 23, I came to realize that there is problem, not in the sense of, and this is very personal to me, problem in my own self in that, right? Because what had happened is कि मैंने इतना लोगों को around me villain जैसा paint कर दिया था, while people might not have wanted to do that or their intentions might not have been that. And I started taking a few small steps in that direction. One of them being that I like, so you mera PS ka account name is Jabu Game. So I started embracing a few things in my life. I started getting hold of a few things in my life. Apart from that, I started realizing my mom at this point is more concerned, not concerned about. First, I used to think कि उनको ऐसा लगता है कि अरे शादी में, because as Sumit said, even तोरा आते हैं, मस्त तोरा आते हैं.
This is the first Tora means you become fat. It basically the first statement I've heard through and through all my phase in my life. So I started feeling that, but then I came to realize, and I saw myself in the mirror, didn't like it, didn't enjoy it at all. December end, I think there was a podcast with KV and Tanmay on it, right? And KV Tanmay ka podcast था जिसमें Tanmay said, and I have done gymming one whole year of 23, right? I have done every day, I've done exercise through, but the whole year of 2023, I lost 1.5 kgs. That's it. Because food intake continued and my exercise also, I wasn't very happy with it. Tanmay said at some point in that I started playing badminton. That is when it took me back to my like 11th and 12th days, that the only time I have exercised day in and day out was those days, because I enjoyed and loved playing the sport. Jan 1st, I went to the closest table tennis place and I signed up to table tennis. I have since 1st of Jan till whatever, till March 1st, for 6 days every week, I have exercised twice every day. Where once I've done the cardio and once I've done. What I came to realize is that मैं बहुत two things. Firstly, I've done all the diets. I've done keto. I've done intermittent. I've done everything that is possible. I've done keto. I enjoyed keto. I loved it. I loved the process of learning how to cook, because I had to learn to cook, because my mother had told, if this is something you want to do, you figure your shit out, because I am not doing this. So keto is Same, the reason same. why I learned how. So keto is the reason why I learned cooking. So I give a lot of credit to keto, to Headbangers Kitchen, to all these people who, yes, so those people. And so keto I loved, but um what I realized is that I had to reduce friction to achieve goals in my life. Cooking was a big friction for me, because my काम इतना ज़्यादा रहता है through the day that I cannot find time to cook. And this is at least me blaming myself. I know I'm wasting 1.5 hours somewhere here or there, but I was blaming myself. Another big friction for me was Swiggy Zomato. So these are small things I am doing on my end. So Jan 1st, March 1st now, I have lost 11.6 kgs with just two things that I have made in my life as a change. One is I have added exercise as a very important, crucial part of my life. I love running. I found peace in running. Like मैं मतलब कभी थोड़ा भी परसेंट ऑफ स्ट्रेस होता है तो सिर्फ जूते पहन के बाहर निकल जाता है, and I just run. I found just love of it, and I don't know how it is. I find like after the first kilometer, I start like going into a place where I start getting creative in my head and stuff like that. So that is just me finding peace in that. Second, I've exercised 6 days every week through and through. And I have, yeah, so intermittent has worked for me very easily, because it is just me eating at 12, eating at 8. So I don't know, Vishwesh bhai ne kuch to naam bola, but that is exactly what idea I am doing, that I eat every day at 12:30 and every day at 8 o'clock, and that's it. But I eat whatever is cooked at home. Monday through Friday, I uninstall Swiggy, I uninstall Zomato from my phone. I uninstall all content apps from my phone, and I only focus on work. And whenever I am not focusing on sitting on work, either I'm talking and I'm on this call, or I'm sitting with mom and dad, because I realize that I start craving for food when people are not paying attention to me, or I'm not amongst people. So जब मैं अकेला होता हूँ तो तब I want food, because I find like companionship in food. That's my general consensus to that. So I think those are few changes I made, and I started at this point. I've come to a place where food has become not a necessity in my life. At some point it was. I was very infatuated to foods and of sorts, कि मेरे को कहीं से भी प्यार नहीं मिलता था तो मेरे को फूड से मिलेगा टाइप्स, कि मम्मी से प्रॉब्लम हो गया, गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी इश्यू हो गया तो खाना वाज माय रेमेडी. अभी मैं खुद I am able to find mental peace in it, and because I am seeing results, I have come to realize that this is working. And now at this point I am in a mindset or a headset, and I'm continuously training myself to this, but in a mindset where I know that January 5th next year on my birthday, I'll be in the best shape of my life, and that is a done deal. वो
वो ड्रिलिंग लेट्स गो भाई। तो बढ़िया मजा आ गया भाई मेरे को। तो मैं तो बास्केटबॉल मैच वाली फील्स थी ये तो। बट नहीं, प्लीज कंटिन्यू। but it all started from me coming to realize that I had blamed a lot of things to people around me instead of looking inwards, because I accept people around me, but I know that people who were in my 10th grade calling me Jabu didn't mean it in the wrong instance. They didn't know better. So it was stupid of me to blame them even 12 or 14 years later. And I don't blame my mom or my dad. But dad doesn't care about it. Dad enjoys it. He enjoys food, and tells me also to keep enjoying. Just keeps telling be healthy or whatever. But yeah, mom also वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनको ऐसा शादी में थोड़ा तो इश्यू होता है कि अरे, क्योंकि उसको भी जाके पूछते हैं ना कि अरे ये तोरा आता है so, but it's okay. Well, I've come to realize that I have to stop blaming others, and this is a very personal, inward looking idea. But when I did that, now I'm very क्या बोलते हैं uh, broken out of that change. At this point, I'm enjoying the process. I'm going to Dharamshala, but I'm so sure I'm not going to get like into whatever food and all that. मेरे को पता है कि सिर्फ सैटरडे और संडे को खाना है, सिर्फ सैटरडे और संडे को खाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी तभी कुछ भी हो रहा है। मैं वो मेंटालिटी में हूँ, बट वो मेंटालिटी में इसलिए पहुंचा बिकॉज बहुत कुछ उससे पहले देखना और ये पड़ा था, बट यस। तो आई वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज I found a good group of people to hold myself accountable on with that group. जिसके वजह से लास्ट मंथ मैंने 50 किया। ये मंथ 50 पे था, बट एक दिन बीमार था, बट उस दिन शाम को मैं 5 और भागा ताकि आई एटलीस्ट पोस्टेड ऑन दैट ग्रुप कि 5 ज्यादा किया मैंने ये महीना करके। सो आई हैड टू फाइंड सम रीजन, लाइक आई हैव टू कंटिन्यूअसली कीप माई सेल्फ गिविंग माई सेल्फ लाइक दो स्मॉल क्या बोलते हैं टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इन माई ओन हेड एटलीस्ट। And as I kept facilitating that, I started seeing results. So, and once you start seeing results, then you enjoy the process. That I've come to realize. अभी तो मेरे को कुछ भी मम्मी सामने खा कुछ लेके भी आते ना, आई से सॉरी आई डोंट, सैटरडे को खाएंगे, मंडे टू फ्राइडे कोई कोई हिला ही नहीं सकता है मेरे को अभी वो उस स्पेस में। भाई एकलव्य भाई गूज बम्स है भाई, मतलब हार्ड ब्यूटीफुल रिलेट, स्टोरी मैन, वाह। हार्ड रिलेट हर दिल चीज से, हर चीज से। ठीक है, मतलब एंड मेरे को आपसे ये सीखने को मिल रहा है कि टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैवंट स्टिल फॉरगिवन पीपल, आई एम स्टिल एंग्री विद देम, मतलब अभी भी मैं, बट लाइक अगर आप में वो चीज आ गई है विच इज लाइक नेक्स्ट लेवल, मैं अभी भी आई विल स्टिल होल्ड अ ग्रज, आई स्टिल थिंक अबाउट इट कि इसने ये बोला था, ये बोला था, वो चल रहा है मेरे दिमाग में। बट जो यू सेड दिस थिंग अबाउट, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, आपने मुझे मैसेज किया था जब मैंने अकाउंटेबिलिटी उस वाले ग्रुप में डाला, आपने मुझे अलग से मैसेज किया था, नाउ आई कैन hard hard relate to that, like we had a small conversation about that. But the very fact, I'll also agree, like I have struggled with it, I did not have an outlet to talk about, and this group has provided me that as well. And matlab it is beautiful, matlab ki there are people who are actually struggling with it, who you can talk to, and you found a safe space, matlab, and this is my safe space, literally this is also my safe place. So like kudos to you यार। और जो आपने कहा ना, एक बार वो चस्का चढ़ जाता है ना, Yes, वो उसके तो बाद तो भाई मतलब मेरे को बुखार है बट नहीं यार, मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी, मेरी स्ट्रीक चल रही है, तो मेरे को बस अपने आप को ड्रैग कर रहा हूँ। सो भाई हैट्स ऑफ टू यू एंड मोर पावर टू यू। अरे no, thank you. Bob, it's just me letting it out that it is possible. And Bob, मैं तो I had no hopes. अरे मेरे को यार अभी धर्मशाला के लिए शॉपिंग नहीं करना पड़ा, पुराने पैंट फिट हो रहे। मैं तो वो उसमें मेरा तो ये हो गया यार कि इट्स पैसे बचा रहा हूँ मैं इट जस्ट फील्स गुड। उससे ज्यादा क्या चाहिए। आई थिंक कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है और यू बहुत बहुत फील गुड, आई दैट आई एग्री। यू जस्ट फील गुड, मतलब आपको हर आई चीज में कॉन्फिडेंस आएगा, वो काम में भी आएगा, अपने सब में आएगा। आई एग्री एंड आई एम वो कोविड के 2 साल तो आई बिकम नंब ऑफ सॉर्ट्स कि लोग पीपल आर टेलिंग मी ऑल दिस, बट आई वाज जस्ट टेकिंग इट एज दे आर जस्ट अटैकिंग मी टाइप्स, वो वाला माइंडसेट में ही निकल गया था। नहीं सो आई मेरा भी वही थिंक है, दैट इज मी सो कमिंग आउट ग्रेट। ऑफ दैट माइंडसेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नहीं तो बिकॉज आई लव टू ड्रेस अप, बट मेरे मेरे साइज का कपड़ा नहीं मिलता था। आई लव टू लाइक
like look good, but would not enjoy looking at myself in the mirror, all of those things, right? But I have stretch marks on my body through and through because I've continuously like lost weight, put on, lost weight, put on, lost weight. So I did not look like to even remove my, like मैं swimming pool में घुसता था t-shirt पहन वैसा type of ये था, and I would wear loose clothes so that it doesn't hug my body वैसा type. But अभी तो मैं घर पे बिना t-shirt के घूमता हूँ. वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में आ गया कि आई जेन्युइनली एट दिस पॉइंट आई एम सो श्योर दैट नेक्स्ट ईयर Jan 5th आई एम गोइंग टू बी इन द बेस्ट शेप ऑफ माई बॉडी, माई बर्थडे की कोई कुछ कर ही नहीं सकता. बट दैट टुक वाइल्ड फॉर मी टू अचीव दैट. मैं वही बोल रहा हूँ 23 का पूरा साल मैंने एक्सरसाइज किया बट 2 किलो वेट लूज किया है सिर्फ. और वो 2 किलो मैंने December 25th से Jan 1st तक पुट ऑन भी कर दिया था. सो एक्चुअली जीरो ही हो गया. So question to you, आपने पिछले पूरे साल वर्कआउट किया, हाँ 2 kg हुआ, हाँ. बट इस साल आपने 3 महीने में 11.5, 3 महीने 2 महीने में 11.5 करा, ठीक है, राइट? मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि इज इट जस्ट द माइंडसेट दैट till last year you were thinking that people are attacking you, or was it something else also? What is different, or did you work like the So 1 year versus two months and trying to get that out of you कि क्या work किया आपका ये लोग? So last year that I was losing weight for other people, to look better in a relationship, maybe that I had like just broken out of, to look better for mom, like because mom was telling me to show to the world that I can do this. This year, for the first time, I'm doing it because I realized that I'm losing control over my own health. I started seeing that I was lethargic for the first time in my life. I could not climb 12 floors without huffing and puffing. So the 1st of Jan जो decision making हुआ, वो making हुआ because this is the first time I'm doing it for myself in a long time. Since I can, and this is the lowest weight I have been since 2020. At this point, Bob, I have put myself on markers by this date I'll be here and I'm aiming to that. But as I said कि लास्ट पूरा साल मैं वेट रिड्यूस कर रहा था दूसरों को दिखाने के लिए. ये साल का फर्स्ट टाइम वो दिसंबर में वो स्विच हुआ था. दैट तन्मय's एपिसोड हेल्प मी रियलाइज व्हाट आई शुड डू because that sport helped, like joining that sport helped my exercise cause of it. कि I joined the sport and I just never wanted to stop because I was learning a new sport. I started becoming better at the sport. And what helped me a lot was मैं actually last year क्या कर रहा था कि every morning I used to climb on the weighing machine and expect big results. जिसके वजह से बहुत इश्यू हो रहा था कि I was expecting lot in smaller durations. I'd read Atomic Habits long back, but in that podcast they discussed Atomic Habits again, so I read Atomic Habits again. And उसमें वो जो हैबिट स्टैकिंग का चीज बताया ना, उसके वजह से मैंने शुरू किया एक हैबिट के साथ. देन आई पुट ऑन स्ट्रेंथ इन द मॉर्निंग. सो नाउ आई डू स्ट्रेंथ इन द मॉर्निंग विद जिम. सो दैट एंड प्लस जो कंपाउंड इफेक्ट ऑफ wherever you can reach, right? So now every morning, even when I weigh and I see 100-200 grams of reduction, I feel very happy. Or even if I still break even on from yesterday to today, I'm very happy. मैंने Saturday Sunday निकाल लिया with a cheat day in the middle and I have put on only 400 grams. I'm okay and happy because I've come to realize that 100 करके ही यहाँ पे पहुंचे. So I've never had like a 1 kg reduction in 2 days 3 days वाला scene. एंड खाने में एंड मेरा सबसे बड़ा फ्रिक्शन वाज फूड. सो वन थिंग दैट आई डिड वाज मैं 5 बजे ही फाइनल कर लेता हूँ कि मैं 8 बजे क्या खाने वाला हूँ. सो आई टेल मॉम कि आई एम गोइंग टू, और मॉम टेल्स मी कि आलू का सब्जी बनाए या व्हाटएवर, आलू कैप्सिकम बनाए या जो भी. तो माय ब्रेन डज नॉट फाइंड बेटर फूड टू सर्च फॉर एट 7:30. दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर कि मैं 7:45 भूखा बैठता था और मम्मी बोलती थी कि समथिंग दैट आई डोंट लाइक इज कुक, तो फोन निकलता था और जोमेटो पे ऑर्डर हो जाता कि कुछ नहीं तो दाल राइस के साथ ये एक चिकन फ्राई मंगा लेता हूँ या वैसा कुछ. So my mother makes आलू कैप्सिकम ओकेश, बट आई डोंट लाइक आलू कैप्सिकम. वेज क्यों खाऊंगा, मैं घर पे खा रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए ही दूर. बट वही है, वो ब्रेन को ट्रिक मैं अभी उस हिसाब से करता हूँ कि 4 hours बिफोर माई मील I tell my brain continuously that what are you eating. But
that's how it helps. So by 7 o'clock, even if I'm hungry, I know that I'm eating this, so I continue. It took me 1 month. January was difficult. February was easier. अभी तो I am enjoying the process. अभी तो मैं Nice. मजे ले रहा हूँ प्रोसेस में. I आई am लिटरली pretty रिलेट हार्ड रिलेट cooperative. होने वाला हूँ ना मैं, बस मैं उस माइंडसेट पे नहीं पहुंचा हूँ, बट जो आप टी शर्ट्स और चीजों के बारे में बोल रहे हो वो सब तो सब हुआ है, मेरा भी पेट ने दोस्तों ने क्या रखा है, एंड आई डोंट completely एग्री कि नॉट एवरीबडी वाज कमिंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ कंसर्न, like some Yeah. people come from No, an area no, of concern, that I some agree. people I are don't I don't think they came from a place of concern. I'm sure they were uh, teasing me at that point. hmm, My instance came from the firstly, I don't have those people in my life anymore. okay, तो fair. वो तो मैं उतना तो मैं उनको स्पेस नहीं देने वाला हूँ लाइफ में. दूसरा मेरा ये है कि बिकॉज आई डोंट हैव देम इन माई लाइफ एनी मोर, आई डोंट वांट टू कीप दैट थॉट ऑफ देम इन माई लाइफ. इज व्हाई आई स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग. अब मैं पीएस में मेरा नाम जाबू गेम्स ही है. Yeah. लाइक आई जस्ट रियलाइज दैट द नेम बाय इटसेल्फ इज unnecessarily put too much weightage on. So that's how. And जो हो गया वो हो गया. उस हिसाब से मैं वो मूव ऑन नहीं हो पा रहा था, उसके वजह से आई वाज बीइंग पुल्ड डाउन. Nice, बट nice, यस, बढ़िया. Uh, रॉ कैप्सिकम तो आई कांट ईट. या अरे सैलेड्स में यार. सैलेड आई कांट डू दैट. hey, आई लव सैलेड. मैं तो I love salads. मैं तो सिर्फ रॉ ही खाता हूँ आई कैप्सिकम. कांट. सेम रॉ मतलब कुक्ड कैप्सिकम नहीं जमता, वो बहुत ही गंदा टेस्ट आता है मुझे. सेम. आई शिनचैन. चैट के शिमला मिर्च पसंद है. बट नाइस यार, क्लेवर भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आई थिंक काफी लोगों को आपने मोटिवेट भी करा है, एंड आई थिंक इट इज अबाउट द माइंडसेट, लाइक दैट माइंडसेट वाला, मतलब आई एम टेलिंग यू, दिसंबर में दैट वीडियो, दैट पॉडकास्ट के मैंने पुट इट इन आवर ग्रुप आल्सो कि मुझसे नहीं, मतलब I didn't watch it. I think today after the session I can go watch it now, and my aspiration will be that change of mindset. So thank you so much. So I, तन्मय पॉडकास्ट यू मीन तन्मय हाँ, केवी. मैंने वो देख नहीं पाया था दैट्स शुरू में, मतलब मैंने दैट्स ग्रुप पे भी डाला था वो कि आई नो दिस इज गोना बी ग्रेट, मतलब उसका कोई रील कट के आई थी, मैंने कहा ये सही होगा, बट मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब तो क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर में आई वाज आल्सो कि आई हैडंट स्टार्टेड माय जर्नी येट, मैंने पता था कि हाँ करनी है, बट वो स्टार्ट नहीं मैं कर रहा था. तो नाउ दैट आई एम, इट्स जस्ट 2 months, बट आई एम इन अ बेटर mindset in place. I think I can now utilize it to catalyst as a catalyst to further enhance it. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो उसने भी बात किया है, तन्मय ने भी इसके बारे में वही इसमें कि एंड आई रेड दैट बुक दैट ही स्पोक अबाउट आल्सो. दैट बुक आल्सो इज वेरी गुड. आई विल सेंड यू दैट बुक का नाम. बट वो कि एक बार बाई मिस्टेक खा भी लिया ना कुछ, शुगर खा भी लिया, यू शुड, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि अरे यार अभी तो कि साला यार ये खा लिया करके, आई एंड आई यूज्ड टू पुट माय सेल्फ डाउन एंड देन आई यूज्ड टू बी लाइक कि चल अभी आज का दिन वेस्ट हो ही गया है तो वेस्ट हो भी गया, खा लेते हैं. फिक्स. और खा लेते हैं. वो मैंने स्टॉप कर दिया. मैं कॉन्शियसली स्टॉप कर दिया कि बाई चांस इफ आई ईट से आई आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ हैविंग सो मच कोल्ड ड्रिंक टिल लास्ट ईयर. वो तो पूरा निकाल ही दे. लाइक शुगर इज आउट ऑफ माई लाइफ कंप्लीटली. One Saturday in a month is what I'm allowing myself at this point because I feel like I have to look forward to something at least in life. So by Saturday I keep looking forward to it. So that, but अगर by mistake I eat something through the week, I still go to the exercise and I don't like keep telling myself कि dude, why the hell did you spoil a day and stuff like that. इसका उसका ऑपोजिट ये था, अगर वो व्हाट द फक हेल्थ वाले में सुनील शेट्टी लाइक निखिल सामंत को बोलते हैं कि हाँ अगर मेरा कोई दिन, इसका ऑपोजिट ये है कि अगर मेरे कोई दिन, मैं आई वर्क आउट 6 days a week, हाँ मेरा संडे इज द रेस्ट डे. नेक्स्ट हाँ बट अगर मेरा कुछ मिस भी हो गया एक वीक, कुछ में डे, मतलब किसी रीजन से भी, इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं संडे को जाके वर्कआउट कर रहा हूँ. अगर वो हाँ मेरा रेस्ट डे है तो वो मेरा रेस्ट डे है, यही इट इज फाइन. सो इट्स द सेम लॉजिक कि ठीक है यार, अगर आज कुछ खा भी लिया तो जैसे मैंने बोला कि इट्स अगेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टार्ट, लाइक, बट उसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने खा लिया तो आप सोचो कि भाई आज तो खा ही लिया तो बस बस खत्म ही कर दो आज दिन को, तो बिल्कुल ही ऐसे कर दो कि बस अब तो. तो हाँ वो
वो सेल्फ लोथिंग बहुत था लास्ट ईयर, Yeah, मतलब आई यूज्ड टू correct. डू दैट अ लॉट कि भाई एक बार बाई चांस आफ्टरनून में कुछ खा लिया तो देन तो मैं डिनर तो देन लैविश ही हो जाता था मेरा कि अरे ये सब मंगाओ क्योंकि कल से क्या पता, कल से क्या पता, वो कल कल बहुत हो रहा था। आई थिंक दैट स्टॉप्ड, आई स्टॉप लुकिंग फॉर दैट मंडे आई विल स्टार्ट वाला एस्पेक्ट। मैं वो नहीं तो मंडे Hmm. को शुरू करेंगे वैसा वाला Yeah. हो जाता। कैन Yeah, वी वेयर that. Yeah, yeah. बोलो. दो ही लेडीज बच्चे हैं तो हाँ. वो लोग भी जाने के पहले उनसे अरे सॉरी सॉरी, हाँ प्लीज प्लीज यार, सो उनसे सॉरी। सुन लेते थोड़ा। एंड छवि ने कुछ तो मेरे अभी को तो बोल रही है पूछा। सुट्टे मारो. नहीं नहीं, छवि ने कुछ तो पूछा या तो बोला। यहाँ मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा। सेल थेरेपी डिसीजन नो एकलव्य, क्या मतलब? Exactly, how did you get to therapy? It's very fascinating to me. हाउ डिड आई गेट टू थेरेपी When did यार? you, in sense, when did you or decide to get therapy and how was the process? We are going into emotional health. Cool. Health ही चल रहा है. करो. तो 21 में ही, वो तो मैं मतलब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर से काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी दिन काम के बिना देखा ही नहीं था। और 2021 में रियलाइज हुआ, 2020 में फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि काम के बिना क्या होता है लाइक। एंड दैट आई कुड नॉट मैनेज इट ऑल, आई कुड नॉट, जस्ट कुड नॉट मैनेज। एंड देन वही घर पे भी लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज वर हैपनिंग एंड आई वाज नॉट एबल टू सपोर्ट, तो वो सब को लेके स्टार्टेड गोइंग इन अ बैड स्पेस एंड आई स्टार्टेड रिमूविंग इट आउट ऑन पीपल अराउंड मी। That's when I started realizing Hmm. I've started to becoming a little out of hand. So that's when I uh, got into therapy. So 21 COVID, uh, Very nice. and then I think I found a few good exercises through my therapist, जिसके वजह से वो mental strength आ गया of coming to a point where at this point people around me don't make much difference on how I am making my life decisions. Nice. Very I nice. Very I proud. I have a question here. मतलब a lot of people, and this is now foraying into a little bit about emotional health, emotional well-being and all. A lot of people talk about meditation. Frankly, I haven't tried it. I haven't done it, but a lot of people you talk about, any CEOs and all, they say they start their day like they'll spend some time in meditation. Anybody has any experiences or anything to share about meditation, maybe? अरे नंदन, मेडिटेशन की बात हो रही है. But can I give like an easy response to meditation? If you have trouble with like the idea of sitting still and breathing, what the core idea is that you do something that completely imbibes your focus and you're not fizzling, right? When you're doing other stuff, we're always thinking about other things that are happening in your head. What you need is a practice that you can completely focus and be present in. So given to Eklavya, if like you're playing a sport, right? And that sport combine like puri tarike se it is using your brain and you're not thinking and you're not, you're focusing on one thing. And it's good. The thing with meditation is you're focusing on your breath. It's like a physiological thing, right? I, I would say कि वो creating art is like that, but when you're creating art, you're still thinking you're still thinking. It's a very cerebral process and it takes parts of you. Physiological things will help better. So any activity that you can complete, like even with things like walking without having a thought in your head, where you're just noticing things that happen on the road, will also work for you. But that is the practice of just shutting your sense of just shut like completely focusing on one Hmm. thing. That is what helps, and that'll help you throughout the day, because then you have better stamina to focus. With all of this conversation around decreasing attention span, Yeah. doing anything that you can completely be in present with will also help. ये था मेरा. अब सुमित बोलेगा. Please give better answer. अरे मस्त आंसर दिया, क्यों? हाँ एकदम मस्त आंसर दिया। मैं नहीं वही बोल होता है मेडिटेशन में भी there is no one fixed rule ना तो रहा था। even if you study back then कैसे करते थे, there are walking meditations, there are art में meditations, so there are a lot of ways of it. I used to do that sit down आँख बंद का app चालू है, तो that kind of meditation I did for 2 years, like on every day around 20 minutes, and it And helped. when Like you're I doing had that, कुछ नहीं सोच रहे आप या क्या ये सोच तो रहे हो? पॉसिबल नहीं होता कभी, like Exactly, my point, my question. कुछ Yeah. नहीं सोच रहा is not the goal of it. The goal is any thought that comes, let it pass through. हाँ, that is Like don't stop any thought कि ये अच्छा thought है, ये बुरा thought है. Like
don't judge any thought that comes, let it pass through, let it pass through. और ऐसा there are certain ways where you focus on your breath, where you scan your whole body, सर से लेके पैर तक, you just shift your attention from head to ears to every individual part of your body. Recently I started doing NSDR, योग निद्रा जिसको बोलते हैं, बट नॉन स्लीप डीप रेस्ट, यूबरमैन के इसमें से सुना था मैंने, बट अपने यहाँ पे योग निद्रा बहुत टाइम से है. So it's sometimes when I get too anxious, I do that, and I have an habit of, मैं रात की नींद मेरी 5-6 घंटे की होती है, so I have an habit of taking a nap in the afternoon. और वैसे भी staying in Pune, it's given that you take a nap यहाँ पे. So I have an habit of taking a 15-minute nap, timed nap. मैं लगाता हूँ timer 15 minutes का, वो virus जैसे. So yeah. So during that, if even then, when I lie down, because I had some adverse reaction to the COVID vaccine, तो मेरा तब से hypertension है मुझे, तो I have to take blood pressure के pills. So when I'm lying down, I have problems, sometimes breathing problems आ जाते हैं. So I sometimes use that to calm myself down. But I'll with this letting yeah. the thought pass wala thing, I've seen with a lot of kids that have ADD, things that so pehle in college I used to work with psychotherapy for kids, and a lot of things that would help them is ki what would happen is that they're focusing on one task, okay, Yeah. but like that thought is too stimulating for them to not process it, or once they start processing the thought, they then get distracted and they can't complete that task. So a thing that would help them is to keep like a notepad, and they would color, and we would make them color it or like add their customization to it. It's like a thing that you keep your thoughts on. So for example, if they're doing a task and then think of something, I'm talking about teenagers, not ऐसे 16-17 साल के बच्चे, and they have any thought that I read this, I will tell my friend this, or hey, ये match में क्या होगा, or anything that could in that moment they would write it down separately as a way that they have acknowledged it once, and once they have the time they will process it better. But keeping it in mind would help, like would worsen the situation for them. So that if you have trouble sometimes focusing on a task, that also really helps, that you take, like you make like a notebook or like a notepad, keep it next to you, and whenever you think of something, just put it there, and then you assure yourself that hey, I will get to this in time. But if you don't think about it or don't even acknowledge it, then it will pakka not let you focus. तो अगर प्रॉब्लम है तो ये मेरे सॉल्यूशन था. थैंक यू. Yeah, it was my question, मतलब problem नहीं, but like I've heard so much about meditation, so I thought कि is it yeah, मतलब कि क्या है, किसी ने try किया नहीं, but let's see, maybe I can give it a try. But thanks. Or like I know Nandini and Chinmay, in fact, Chavi, if you also want to share something, you guys are the ones who haven't shared anything right now, and like otherwise, like we can get into conclusion mode kind of a thing, because this is a Hey, never ending. let's hear back सबका ना. हाँ भाई, हाँ that's all वही. I Like want to hear. Yeah. मतलब no, according to Yeah, elders in Indian family, nobody is the right weight. सब लोग में हाँ. खामियां है. And So actually, you know what? Sorry, I don't know इधर यहाँ पे कोई है, but there is the other. We've been always right now till now talking about people to जिनको lose करना है weight, right? Like overweight and all that. But हम्म. I know there are people who struggle, जो बहुत ही पतले हैं. They also face kind body shaming, yeah, and they बहुत are बहुत. yeah, they are too thin, and like they are the ones who also go to the gym or something. They're trying to bulk up or put weight. They also go to the same traumas or the body shaming kind of a thing that we do. So if I don't know if you know anybody who went through that, or anybody, so that is also equally important to talk about, I think. अरे मेरे हेलो, घर पे आई कैन गिव फुल पंजाबी फैमिली एग्जांपल. नहीं नहीं, आप बोलो पहले. नहीं, मेरे घर पे मेरा लड़का अंडरवेट है, एंड ही ऑलवेज गॉट, मतलब सारे रिश्तेदारों से और इससे कि भाई
माँ बाप सारा खुद ही खा लेते हैं क्या, तुम्हें खिलाते नहीं है क्या, टाइप्स रिमार्क ऑलवेज, कि पापा ही तुम्हारा भी डिश पापा ही खा लेते हैं क्या रोज, I think is इज अ वेरी it कॉमन रिमार्क। they say it as a joke ना ऐसा, हाँ 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 like हाँ if हाँ the मतलब मेरा भी ऐसा ही होता था, बहन पतली मैं मोटा, and they were like तू ही खाता है क्या इसका, ऐसा वो होता ही है। क्या दिलजीत भाई आप बात कर सकते हो, लाइक डू यू वांट टू शेयर? आई नो you connected with this one where you have to put weight. दिलजीत भाई आप बोल दो कि मेरी हमेशा ही बीच बॉडी थी, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, आई डोंट एग्री। मैं मतलब मैं बोलने वाला था दिलजीत भाई बॉडी इस हिसाब से रखे हैं कि 2-3 बैग उनको बॉडी में बांध के थोड़ा टी शर्ट ऊपर से लगा के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं ना फिर। मतलब मेरे हॉकी दिमाग में तो के आई वाज ऑलवेज द परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ फिजिकलिटी, बट चलो I अगर आप know, अग्री right? Epi- अग्री epitome हाँ, of this is the body पीक ह्यूमन body फॉर्म, पीक positivity we पीक the need. ह्यूमन फॉर्म। the zenith of human physical form। आप एकलव्य भाई से भी ऊपर बॉडी पॉजिटिविटी में चले गए हाँ हो। वो तो एकदम। नहीं निर्वाण तब से मैं वही आई एम लाइक कि कुछ तो मैं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा क्या कि मतलब बिकॉज एंड दिस हैपेंस एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, लाइक इस ग्रुप में दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम कि जैसे व्हेन द सेशन स्टार्टेड ना, मेरे दिमाग में एक दो थॉट थे, एंड देन व्हेन आई हियर एवरीवन स्पीक ना, तो मैंने कहा नहीं नहीं चुप रहना थोड़ा ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगेन वेरी प्रोफाउंड थॉट्स अभी तक, वेदर इट इज सुमित टॉकिंग और विशेष टॉकिंग और एकलव्य टॉकिंग या छवि टॉकिंग, बट लेकिन ये दिक्कत हमेशा अगे इसे दिक्कत भी नहीं मैं कहूंगा, बिकॉज वन आई हैव नेवर सॉर्ट ऑफ, ये थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेन वेट, क्योंकि शायद अनमोल ने या छवि ने गाना सुना होगा, दिलजीत दोसांझ का एक गाना है कि लक 28 कुड़ी दा 47 हाँ, वेट कुड़ी दा। तो something आई हैड एन अमेजिंग। इंजरी ऐसे कुछ साल पहले, एंड मैं उस स्टेज पे था, मतलब आई माय वेस्ट वाज 28, माय वेट वाज 47, है ना, तो विच probably would look attractive, which probably would look attractive on a female, but मैं ऐसे like look like an infant, just a tall infant, तो वो था, एंड देन यही सारा मतलब फिटनेस का जब भी आप देखो ना, यू वुड हियर सो मेनी एंड आई एम नॉट एट एनी पॉइंट मतलब डिमिनाइजिंग एनीथिंग दैट यू हैव बीन सेइंग, लेकिन मुझे ऐसे एटलीस्ट लगा कि a lot of the stories या majority of the stories were about people wanting to lose weight, and I also acknowledge that जैसे श्योर एक ओवरवेट होना और अंडरवेट होना दोनों प्रॉब्लम है, बट इफ आई वर टू चूज टुडे आई वुड से कि हाँ चलो अंडरवेट ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बीइंग ओवरवेट इज अ बिगर प्रॉब्लम, एंड आई नो दैट बिकॉज जैसे हमारे वी आर थ्री फैमिली, सो जिगरजीत की फैमिली है, हमारी फैमिली है, एंड देन तीसरे चाचा जी उनकी फैमिली है, राइट। तो हमारा क्या है कि जिगरजीत अभी ही लॉस सम वेट, बट उस ही हैज टू सिबलिंग्स, वो तीनों थोड़ा हेवियर साइड पे है, मैं और मेरा भाई वी आर ऑन ऐसे स्किनी स्किनी जोन में, और हमारी जो तीसरी फैमिली जो तीन हमारे कजिन्स है, दे आर सॉर्ट ऑफ द बैलेंस, वो ठीक है, मतलब कि दे कंसिडर्ड फिट। तो I've seen the challenges that the heavier people face. I've seen the challenges that my sibling and I face. So the struggles are definitely more for people who are overweight, या people who are trying to lose weight, क्योंकि while मतलब कहीं ना कहीं वो पतला होना is maybe not for all the males, but कहीं ना कहीं पतला होना is seen as the ideal condition ना। तो I won't say कि I have been bullied या किसी ने bully भी किया होगा और मैं ऐसे ध्यान नहीं दिया होगा, I haven't been called name as such, लेकिन वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है बीइंग अ प्रॉपर बॉडी वेट या वेट से कम, आई थिंक, क्योंकि आई वे 73 अभी अभी कल परसों मैंने मेजर मेजर किया था, एंड 73 किलो, एंड मेरा है कि मैं 75 हो जाऊं तो आई एम ओके वेट, मुझे नहीं पता वेदर दैट इज अ गुड वेट फॉर अ पर्सन हु इज 5 feet 10 inches टॉल, लेकिन मेरा शुरू से रहा बिकॉज आई कम फ्रॉम 47 ना, तो मेरा था कि हाँ 75 तक जाना, बट देन इवन एट दैट वेट आई एम वेरी स्किनी, मतलब कि मुझे एक स्कूल का इंसिडेंट याद है, दिस वाज क्लास 9 8 और 9,
तो तब हमारे ऐसे होता था कि जैसे ऑब्वियसली लड़कियों की स्ट्रेंथ कम थी, तो एक लड़की पे तीन सीटर होते थे, एक लड़की बैठती थी, दो लड़के बैठते थे, राइट सीट। तो मेरा एक फ्रेंड, उसे ऐसे मजाक करने की काफी आदत है, तो वो ऐसे फ्री पीरियड में, दिलजीत डोले दिखा डोले, एंड ही वाज अ थोड़ा ही फिट किड है ना, दिलजीत डोले दिखा, एंड मैंने ऐसे ऑब्वियसली मोशन किया डॉलर दिखाने का। और फिर वो साथ में लड़की, आई कैन ड्रॉप हर नेम क्योंकि कोई ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, प्रियंका, प्रियंका तू दिखा डॉलर दिखा, एंड दिस इज अ स्किनी गर्ल है ना। तो प्रियंका ने भी डॉले दिखाए, एंड प्रियंका के डॉले मेरे से बड़े हैं। तो तो उसका उसका फिर अब एक साल तक, ओए ओए दिलजीत के डॉले प्रियंका से कम है, और दिलजीत के डॉले प्रियंका से कम है। मतलब ऑब्वियसली वी लाफ्ड अबाउट इट, बट दैट वाज कि आई वाज नेवर, क्योंकि एक होता है ना कि बीइंग अ मेल भी, हाँ बाइसेप्स होने चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, यू हैव टू लुक फिट एंड वो। तो ऑल्दो आई थिंक वेट वाइज आई वाज ऑलवेज ऑन द ओके जोन, आई नेवर गेन्ड एनी मसल। एंड अभी बिकॉज आई, निखिल भाई ने सीडेंटरी जॉब की बात की है, बियर बेली या पॉट बेली या जो भी हम स्किनी उसे, फैट। हाँ बेबी फैट, या देयर इज अनदर टर्म, वो उसका जो कि ना, पॉन्च, पॉन्च इज आल्सो अनदर अनदर वर्ड ना, अपना। तो मतलब मैं कहीं से कुछ नहीं गेन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो पेट मोटा होता जा रहा है। तो तो अब आई डोंट नो उसको, आई हैवंट वर्कड ऑन गेटिंग, क्योंकि मेरा है कि मैं अब क्या करूं, मतलब वेट लूज मुझे नहीं करना है, ठीक है, वेट तो मुझे बढ़ाना है, बट देन आई ऑल्सो वांट टू लूज दैट बेबी फैट या पॉट बेली, बियर, जो भी हम उसे जो भी प्यारा नाम देना चाहते हैं, क्योंकि वही जब कपड़े पहनो तो इट 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 लुक्स थोड़ा, इट लुक्स बैड, फॉर वुमेन द टर्म इज प्रेग्नेंट। हाँ, करेक्ट। तो वो कुछ तो ऐसे ही। ये वाला तो क्या शेमिंग मैंने भी फेस किया है ना, कि दूसरा बच्चा तू कर रहा है क्या, वैसे वाला मैं, ये तो मेरे हाँ साथ हुआ है। मतलब आई आई नॉट प्लेड हैव इनटू दैट, आई प्लेड इनटू दैट। मैं ऐसा घूमने जाता हूँ, फैमिली के साथ बोलते हैं मोटा है मोटा है, तो मैं ऐसा ये पकड़ देता हूँ, ये लो ये करो, तो करेक्ट। सो फ्री मेरा डिलीवरी फोटो शूट करो मेरा। मेरा बहुत बढ़ गया था कैलिफोर्निया में, एंड व्हाट हैपेंस इज विद हैंड्स लाइक दीज, राइट? मतलब इट इज दैट मच मोर डिस्प्रपोर्शनेट, आई एम नॉट सेइंग। एग्जैक्टली हाँ, वही, Yes. बिकॉज व्हेन यू वर टॉकिंग, यू टॉक्ड अबाउट द टर्म डिस्प्रपोर्शनेट। तो हाँ, ऐसा नहीं, मतलब इफ यू टेक, जैसे लेट्स से आई हैव फ्रेंड्स जो मुझे देख के कहते थे कि क्या है तेरा पेट, तू इधर देख, वो फिर अपनी ऐसे बड़ी तोन दिखाएंगे, ऐसे हाथ मार के ठप ठप करके, क्या है तेरा तेरा पेट, तू ये देख। बट देन आई एम लाइक, तुम मेरे से, यू हैव मोर मसल देन मी, है ना, तो इट करेक्ट। लुक्स ओके देयर, आई हैव, बाकी ऐसे I remember पता नहीं। thinking, I remember thinking some bigger people than me actually look more attractive because at least it's एग्जैक्टली, distributed हाँ ना। मेरा हाँ कैसे हाँ। होता था, it's coming and it's going like very weird। तो वो एक बहुत गंदा टाइम था कैलिफोर्निया में। आई हैव सम फोटोज ऑल्सो, कभी मैं डालूंगा। तो एक इसमें सीरियसली ऐसा लग रहा है कि आई एम ड्यू एनी डे नाउ, मतलब ऐसा हो रहा है। तो दैट बिकम्स वेरी बैड, एंड या, तो या वो एक अलग है। बट ऑल्सो आप जब बोल रहे थे ना कि अंडरवेट के कम चैलेंजेस होते हैं, अंडरवेट में लोग आपको उतना टॉन्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट हाँ, कंसर्न अबाउट यू। अंदर हो सकता है आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी खेल रहे हैं होली, है ना, आफ्टर बीइंग लाइक लीन एंड ऑल दैट। बट इफ यू आर लीन, देन दे विल बी लाइक हाँ यू आर ओके, दे डोंट केयर कि अंदर क्या चल रहा है। इफ यू लीन यू आर फिट, तो मतलब वो वाला पूरा थ्योरी उसमें ब्रेक हो जाता है कि दे आर कंसर्न अबाउट यू घंटा, दे आर लुकिंग फॉर थिंग्स टू पुट यू डाउन ऑलवेज, और ये बहुत इजी हो जाता है। नहीं, they, I ओवरवेट, don't think it's about you. They're looking to make हाँ, themselves feel better. करेक्ट। बेटर, हमेशा हाँ, I've या always seen, मेरे से fatter person would say कि अरे तू मोटा हो गया, तू तो मत बोल बहन चुप। करेक्ट, यस, या ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। तो इट्स दैट, एंड इसलिए हम ऐसे वो खाचे या मोल्ड बना देते हैं ताकि उसके थोड़ा भी इधर उधर कोई जाए तो हम कुछ बोल सकें। तो एनीवेज दिस इज गोइंग हाँ, इनटू वैसा वाला टेरिटरी। बट डिफेंस मैकेनिज्म आप अपना क्रिएट कर लेते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो करोगे ही आप। ऑल्सो एक चीज मैं और बोलना चाह रहा हूँ, हम्म। मतलब जो इंडिया में हम जनरली करते हैं, एंड विच इज ट्रू जनरिकली फॉर एवरीथिंग, कि जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि हमारे यहाँ पे एक कोई बहुत अच्छी डिश बनाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम लोग का जो सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो भी इंडिया में जो बचपन में जो जलेबी खाई थी वही जिंदगी भर खानी है मेरे को। जलेबी। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम जनरली ज्यादा चीजें करने लग जाए लाइफ में, तो हम विल नॉट कीप गोइंग बैक टू दैट
happiness that we had when we were 6 years old in general also. तो एक होलसम लाइफ जो कि मतलब मुझे नहीं लगता, हम लोग ऑब्सेस हो जाते हैं कि मैं एक बार वो बैडमिंटन में जो जीता था अब मैं जिंदगी भर जीतना चाहता हूँ, वैसे ही वो एक बार जो मैंने भाकरवड़ी खाई थी मैं वही खाऊंगा हमेशा. तो दैट ऑल्सो कॉजेज ऐसे ग्रोथ इन अ वेरी, मतलब वैसा वे, मतलब ग्रोथ जो हमको नहीं चाहिए. तो अगेन मैं थोड़ा सोशोलॉजिकल हो जाता हूँ, बट आई थिंक इट गोज देयर. I appreciate it. देखा, निखिल, I'm Thank so you, proud thank of नहीं, you. you. but I totally related to Nikhil bhai. Like, and I can share a little bit of my story. I didn't like, मेरे केस में भी क्या है, तो मेरे केस में सेम अकलव्य भाई की तरह, like, नाम डोलू was the name that friends had kept, and so in my case the problem is my having a little bit of a height. That way it helps. ठीक है, it helps a little bit कि वो इतना नहीं दिखता. Problem is my upper body is a little more heavy than my stomach. Okay, so because of that what happens is man boobs basically. ठीक है, तो वो उस पे तो जितनी बॉडी शेविंग हुई है स्कूल पे, मतलब and कि तो कि people are insensitive in school, kids, and if you get in those teens years, आके they will touch you there, and they'll be like make fun of you also, and all those things has happened, and that happens Yeah, yeah. because in my case it's always my legs are lean. It's not like कि मेरे legs पे fat है because I keep playing, running, everything, doing that, but my upper body is heavy, which requires me कि मेरे को पूरा ही, मतलब वो जैसे ना चेस्ट एक्सरसाइजेज ही करनी पड़ेंगी, मतलब तो वो जो आप डिस्प्रोपोर्शनेट वाले कह रहे हो, तो उसकी वो फिर वो उस तरह की वो आएंगी, और आप फिर सडनली होता क्या है, मैं टी शर्ट्स नहीं पहनूंगा, मैं लूज, जो वो बोल रहे थे क्लब में, मैं शर्ट पहनूंगा, क्योंकि टी शर्ट में तो वो चिपकेगा वो, राइट. आपको फोटोज नहीं खिंचवानी, आप फोटोज में पीछे खड़े होगे, आप सामने नहीं खड़े होगे. सो ऑल दोज थिंग्स देन स्टार्ट प्लेइंग इन योर माइंड, और आप ही कॉन्शियस होते रहोगे, जबकि इतना कोई, अगर कोई और नहीं हो रहा, आपने अपना वो दिमाग में बना लिया है कि ये तो अब मतलब वो है, मतलब आई तो हैव लाइक boobs and all that and all those Yeah, yeah. things will happen. सो ये जो आप बोल रहे हो ना, फ्रॉम मतलब मेल्स में तो और ब्रूटल हो जाता है ना, हाँ, करेक्ट. बिकॉज इवन व्हेन यू लव समवन यू वांट टू हर्ट हिम, मेल वाले जो फ्रेंड, मतलब वो है कि ज्यादा उड़ मत चल इधर आ, तो ये तो लेजिट ग्राउंड्स होंगे ना परेशान करने के. यार ये तो तो बहुत एंड ही आई ऐसा हैव ट्रॉमेटिक. डन दिस, मतलब मैं वही, मतलब यहाँ पे क्या वो है कि एंड यू डू इट एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि आप कर क्या रहे हो. मतलब वो बच्चा भी आपके ही एज का है, ही इज सेम वल्नरेबल, बट फॉर द लैक ऑफ जोक्स एंड टू डू जोक्स एंड टू पुट योरसेल्फ अक्रॉस एज फनी, हॉरिबल थिंग्स, मतलब आई थिंक या हैपन. Yeah, you try to tend to question your own करेक्ट. masculinity हाँ. वैसा, like it's या. very hard. It's like या. whenever like मेरे केस में तो weight fat used to get deposited in my chest and stomach, so it was so horrible when ऐसे ही लौंडे ऐसे हाथ लगा के जाते हैं, यार ये हाँ, क्या वही, है. सेम सेम. It was very horrible. सेम, बट आई थिंक हमने दिलजीत भाई हम फिर अपने वाले ट्रॉमास पे आ गए, आपके ट्रॉमा आए को बहुत ही. मैं यहाँ पे साइडलाइन कहना कर चाहता हूँ, नंदिनी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, और हमारे ट्रॉमास ही खत्म नहीं हुए. चिन्मय भाई और नंदनी दोनों बच्चे हैं, और और नंदन भी है ना. नंदन ने सबसे पहले बोला था. अच्छा, बोला था क्या वो? सॉरी, आई हाँ, मिस्ड इट. हाँ. नंदन नंदन सो गया होगा. नंदन हैज नथिंग टू वरी अबाउट, आई थिंक. अलग छोड़ तरह ही का दिया अरे उसने. छोड़ ही दिया. छोड़ ही दिया. He छोड़ left, guys. दिया. नंदन टिंडर पे लेफ्ट स्वाइप करता है. दैट्स हिज प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट, नंदिनी. He's not on any apps. मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा. हाँ उसका हाँ. नहीं, प्रोफाइल तो एक हमने सेकंड, एक बनाया सेकंड, था. लेट्स जोक मार रहा लेट्स था. दैट क्लोज वाज अ द जोक. लूप, लेट्स ऐसा क्लोज द नहीं लूप बोलता. दिलजीत भाई का. तो दिलजीत हाँ, भाई, कर. लाइक क्लोजिंग द लूप, आप कह रहे हो कि यू वांट टू गेट टू दैट 75, लाइक कमिंग टू, लाइक हैव यू, लाइक आर यू ट्राइंग टू जिम फॉर इट, आपने कुछ देखा है, आप कुछ कर रहे हो उसके मैं लिए, या वही कुछ. अगेन मेरा मेरा प्रॉब्लम है बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू यू गाइस एंड द अमेजिंग प्रोग्रेसेस यू हैव मेड, देयर थिंग्स यू डू. मेरा अभी तक इशू क्या रहा है अगेन, क्योंकि बिकॉज आई हैवंट बीन रिडिक्यूल्ड दैट मच, है ना, जैसे मैं पहले थे, तो आई हैवंट अभी तक हैड दैट ड्राइव कि हम शुरू करें. आई हैव टू श्योर. तो क्यों, मतलब पतला या तो आई हैव अ वेरी थिक स्किन डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी मसल, तो मतलब कोई बोलता भी तो आई डोंट टेक इट टू हार्ट. लेकिन
मतलब मेरा हो रहा है कि जिम जाऊंगा बट मेहनत लगेगी, तो इतना करने की जरूरत है क्या? लाइक लाइक आई मीन दैट स्पेस ऑफ बट माइंड, है ना? रिडिक्यूल नॉट हेल्प्स, नहीं है, डजंट हेल्प। मेरे को, हमें बचपन से हो रहा है, बट हम बस उसके उसके अंदर घूम रहे हैं, Again, कुछ कर नहीं again, रहे। this is a very me problem because fitness should never be about getting to that ideal weight, और मतलब हमें, एंड अगेन क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब एक टाइम था, एंड दिस इज व्हाट सम 4-5 साल पहले की बात है। तो घर में गाय भैंस रहती थी, तो वो सुबह उठ के चारा काटना, ये करना सारा, उस मतलब कि इनफ फिजिकल फिटनेस हो जाती थी। यू डोंट नीड टू गो टू जिम, एंड वो सब ठीक था ना, बट वंस दैट स्टॉप, started working a desk job, started working 2 desk jobs, है ना, बेसिकली। तो वो बिल्कुल ही अगेन बॉडी वही की वही है, लेकिन बैठे बैठे पेट बढ़ने लग गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत टाइम से सोचा कि नहीं नहीं, एटलीस्ट रनिंग करनी है, मतलब जिम, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम जाना है, क्योंकि कभी वो मसली बनने का हुआ भी नहीं कि ऐसे करेक्ट। बहुत बड़े डोले होने चाहिए या वो भी। लेकिन ये रहा है कि हाँ, पेट अंदर होना चाहिए, ये एक वो है कि हाँ, पेट अंदर होना चाहिए, ताकि जैसे आपने कहा टी शर्ट नहीं पहनते, यू हैव योर रीजंस, मैं टी शर्ट नहीं पहनता बिकॉज वैसे वो झोला लगती है बिल्कुल, है ना? Any t-shirt is a loose t-shirt now, so I always you'll probably see me wearing only shirts and या कुछ ऐसे, and the only reason I like winter is because I get to wear लव विंटर्स। layers, layers। वैसे I hate winters, I'm a very summer person, लेकिन I get to wear layers, और थोड़ा सा ऐसे बल्क ऐड हो जाता है विद जो भी 2-3 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स है वियर, तो ठीक ठीक लगता हूँ, है ना? लव और विंटर्स समर पे में भी तो मोटापा छुपता है जैकेट में। हाँ, मतलब अगेन द सेम थिंग फॉर डिफरेंट रीजंस, राइट? हम्म। तो वही, लेकिन मेरा हाँ है कि आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट बिकॉज आई सीन वही आई एम व्हाट 30, आई टर्न 33 और टर्न 34 दिस ईयर, तो एज 49 हैज crores. स्टार्टेड। 49 के 47 49. नहीं नहीं, 47 फोर्टी इंच कुड़ी नाइन दा एंड हाफ 49 फुट, नहीं, नॉट नॉट वेट, एज वाइज। तो तो वो लग रहा है कि अगेन आई आई वॉक अ लॉट, मतलब ऐसे जैसे मैंने अगर मार्केट में भी जाना है ना, आई आई वॉक, अगर 2 किलोमीटर भी जाना है, 3 किलोमीटर भी जाना है, तो आई वॉक, तो वो उतना मैं रखता हूँ कि ऐसा नहीं कि भी बिल्कुल घर से ऐसे 5 मीटर की दूरी पे जाना है, तो हाँ जी मोटरसाइकिल उठा लिया और ये कर लिया। तो आई ट्राई टू डू दैट, एंड आई हैव नोटिस दैट आई जनरली, मतलब आई डोंट इवन गेट टायर्ड दैट मच। तो बट उसके लिए आई आई थिंक आई कैन, आई डोंट नो इफ दैट्स द रीजन और नॉट, आई डोंट ईट मच। मतलब अब मैंने खुद से ही ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो मुझे दिन में एक ही बार खाना खाना है। इट्स नॉट इवन इंटरमिटेड ईटिंग और कुछ भी, मतलब मेरा जो जो प्रॉपर मील हमारे घर की होती है, तो वो मेरी दिन में एक ही बार है कि 4 रोटी, जो भी दाल जो सब्जी है, और उसके साथ दही, ठीक है, दैट्स जस्ट वन, और फिर दिन में एक बार चाय पी लिया। अब नाउ द, जब ये सुमित लोग आए थे मेरे घर, स्टेड फॉर अ कपल ऑफ डेज, सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज क्या हो गया था कि ऑब्वियसली आई हैव टू बी अ गुड होस्ट, हमारी पहले एक डिस्कशन हुई है ना कि भी यू हैव टू बी अ गुड होस्ट, कि अभी ऐसे कैसे नहीं खा रहे, तो इनको तो 3 टाइम खाना खिलाना है, ठीक है? तो लेकिन लेकिन साथ में मुझे भी खाना पड़े, साथ में मुझे भी खाना पड़ेगा, एंड सुमित, आई एम टेलिंग यू कि दैट वाज प्रोबेबली आफ्टर 2-3 साल की मैंने से दिन में 3 बार खाना खाया है ना? तो ठीक है, तो एंड आई व्हाट आई नोटिस वाज कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लाइक आई कुड ईट हाँ इफ आई इफ आई ईट इट, लेकिन मेरे को जरूरत महसूस नहीं होती, तो मैं एक टाइम के खाने पे आई एम ओके। प्रोबेबली इसीलिए इतना वेट गेन नहीं कर रहा हूँ जितना करना चाहिए, बट बॉडी को, अब जैसे किसी शादी पे भी गए, तो हम वही पंजाबी वेडिंग्स को क्या है कि यू स्टार्ट विद पहले से स्नैक्स, करेक्ट। फिर खाना तो खाना ही है जाने से पहले। तो मतलब पहले ऐसे 250 किलो पनीर के पकौड़े खा लिए, और फिर जाते हुए चावल रोटी ये सब भी खाना है। तो मेरा खुद खुद का वो हो गया है कि अगर पहले ये पकौड़े वकौड़े खा ले, तो नहीं खाना खा ले, क्योंकि पेट भर गया है, खाना खाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो वो पता नहीं, वो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन है व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। आई डोंट ऑलवेज फील द नीड टू ईट, जैसे जैसे आपने कहा था ना, किसी के घर भी जाओ, तो बहुत ज्यादा रिश्तेदारों को मैं जाता भी नहीं, लेकिन जहां जाता हूँ दे हैव रियलाइज कि इसको खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो दे हैव स्टॉप्ड सेइंग दैट, मतलब मेरे, एंड अगेन प्रोबेबली टू मच इंफॉर्मेशन, लेकिन
यहाँ पास के टाउन में मतलब मेरे 5 मामा जी रहते हैं, तो विच इज बेसिकली जब हम बचपन में जाते थे 5 टाइम खाना विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स ओनली। मतलब इसके घर गए तो ऑब्वियसली वो भी खाना खिलाएंगे, फिर इसके घर गए वो भी खाना खिलाएंगे, इसके घर गए वो भी। अब फिर मैंने दिस इज इन द पास्ट, फिर है क्या कि हाँ मैं उनके घर खाना खाया है, जो खाया भी नहीं है, बिकॉज दे वोंट गो क्रॉस चेक ना। तो मतलब क्योंकि घर से खाना खा के गया हूँ, तो आई वुड कम बैक, पांचों को बोला हाँ मैंने मतलब दूसरे के इसके घर खाना खा लिया, एंड अगले दिन वो तो खाना खा के किसके घर गया था और क्योंकि किसी के नहीं खाएगा, जरूरत नहीं थी। तो आई हैव सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू ईटिंग हैबिट्स। लेकिन वो एक्सरसाइजिंग की या मतलब कि चाहे रनिंग कर रही है या कुछ भी करना है, वो अभी तक नहीं हो पा रही है। तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइकिंग ऑल योर स्टोरीज की, इवन इवन एकलव्य ने जब बोला कि वो रनिंग इतना करना है, तो आई वांट टू गेट टू दैट फेज कि भाई कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। फिर मे बी खाने का इंटेक भी उसके साथ बढ़ जाएगा, दैट्स बात की बात, लेकिन लेकिन उस पे आई हैव टू वर्क ऑन दैट। Just to add to that, what you can do, Diljit bhai, is कि you find your sport or your activity. It need not हम्म be a gym, it need not be running. सबका अलग होता हम्म है. And I think having a buddy always helps. मतलब कोई साथ में हो तो सही रहता है, मतलब वो पता नहीं, वो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं नहीं, रहता है. 100%। मेरा हाँ. मेरा प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगेन मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट इन द टाउन एनीमोर। वही है कि तो मतलब कि जैसे निखिल मिले थे, माय फ्रेंड जसपाल, ही मेट निखिल मिले थे हमसे, एंड छवि ऑल्सो मेट। तो ही अगेन, मेरा मेरा गोल वो है, ही वो स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते थे, एंड वो अभी कॉर्पोरेट वो बास्केटबॉल टीम वगैरह, एंड वही रोज जिम जाना है। तो एंड ही ऑब्वियसली वो उसके गोल्स थोड़े बड़े हैं, तो वो कभी मिस कर जाता, तो वो मैंने कहा यार मैं तेरे जितना दिन में 5 हफ्ते में 5 दिन भी कर लूँ तो इट्स ए चल लॉट फॉर मी ना। तो वो कभी कभी आता है, जैसे ही वाज देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज अभी, तो वो हाँ हाँ सुबह चल, हालांकि मैं 7 बजे काम फिनिश कर रहा हूँ मॉर्निंग में, बट ही मतलब हाँ चल रनिंग करके आते। तो मतलब कि अगेन वही, बट व्हेन यू हैव समवन लाइक दैट, करेक्ट. तो दैट रियली हेल्प्स। लेकिन जब वो फिर चले जाता है, ऑल्दो हाँ. ही इज टेक्सटिंग मी कि कल जाएगा ना। हाँ हाँ जाऊंगा, ऑब्वियसली आई वोंट गो क्योंकि नहीं है साथ में कोई। तो वो चीज है, बट या आई हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी फैमिली में ही माय यंगर कजिन्स, जो आइडियल वेट वाली 3 है तो दे गो दे डू मतलब वो जिम जाते हैं, दे वो, तो ऐसा भी नहीं कि आई हैव टू लुक वेरी फार फॉर इंस्पिरेशन आल्सो, एंड आई हैव सीन देम वो मतलब कि ऑब्वियसली तो हमारा क्या रहता है, जब घर में शादी होती है तो हम ऐसे भी हाँ सबको एक जैसे कपड़े सिलवाने हैं, है ना। तो ऐसे हाँ. कोट की थान ले आए और उससे 6 हाँ. 7 हाँ. सूट हाँ. बनेंगे, है। लेकिन वो 6 लोग पहन रहे हैं, एंड यू सी द फिटिंग का डिफरेंस कि अच्छा इसके तो बिल्कुल ऐसे बॉडी में बिल्कुल सही लग रहा है, ये मेरे ऐसे झोला क्यों लग रहा है, या उसके इतना ऐसे बेकार क्यों लग रहा है। एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाउ द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, ऐसा नहीं है कि दे आर वेयरिंग बेटर क्लोथ्स, दे आर वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, बट एक पे ये बहुत अच्छा जच रहा है, हाँ. और दूसरे पे इट्स लुकिंग वेरी शैबी, या इट्स नॉट लुकिंग एज गुड एज इट शुड। तो वो हमेशा से रहा है कि आई हैव पीपल दैट आई कैन प्रोबेबली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम इन विद इन द फैमिली इटसेल्फ। लेकिन वही अभी अगेन में भी थोड़ा और जलील होना बाकी है, तो आई हैव तो नेवर वही। बीन एबल टू शॉप ऑनलाइन, मतलब कपड़ों के लिए. कपड़ों मेरे से हाँ होता ही नहीं, हाँ क्योंकि वो मॉडल तो बहुत सही लग रहा है भाई फोटो में. हाँ, अपने पे एग्जैक्टली तो नहीं आएगा ना एग्जैक्टली। ऐसा. हाँ 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 हाँ, तो या बट नाइस. चलो तो आप अब कोई अकाउंटेबल बडी ढूंढ लो कोई. नहीं नहीं, करना है करना है करना है। या बट नाउ चिन्मय, you want to share? I think Nalini, Chinmay, Chinmay, you next. या श्योर। तो मेरा सीन ऐसा था ना कि when I'm growing up, I had a friend who was basically we were same age. तो उनके दादाजी was majorly into exercising, and he was a पंडित basically. तो संस्कृत मंत्रों के साथ प्रॉपरली सूर्य नमस्कार कराते थे हमसे. So since the age of 5 to I think 10, 11 years of age, I used to consistently do Surya Namaskar. So what I remember from that time was कि क्लास के बच्चे अगर कोई सीजनल फ्लू या कुछ आता है उसमें बीमार पड़ रहे, आई वॉज यूजुअली नॉट द वन हु गेट्स इट. तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था बिकॉज आई वॉज बिजी डूइंग अदर थिंग्स एंड ऑल. ऑलवेज कुछ ना कुछ चलता रहता था, सो आई वुडंट कीप अटेंशन टू इट. तो हुआ ये कि आफ्टर आई थिंक 6th standard में हिज फादर गॉट द ट्रांसफर एंड ही लेफ्ट द सिटी, एंड उसके बाद माय एक्सरसाइजिंग कंप्लीटली स्टॉप.
और एस्थमा का एक वर्जन होता है जिसको बाल दमा बोलते हैं, जो ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू चाइल्ड्स वगैरह होता है, चिल्ड्रन. सो आई गॉट डायग्नोस्ड विद दैट अराउंड द सेम एज, अराउंड 10 अगो. फिर मेरा थोड़ा हेल्थ का टर्म में थोड़ा होने लगा कि थोड़ा भाग रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी मुझे मतलब पल्स रेट वगैरह बढ़ रहा है एक्सेट्रा. देन कफ एंड ऑल स्टार्टेड गेटिंग इनटू पिक्चर. And that is the time when I was started eating unhealthy. And in by unhealthy I mean सारा मैदा वाला बिस्किट्स वगैरह चाय के साथ बिस्किट डुबो के खा रहा हूँ. एंड आई वॉज मतलब आई हैड नो कंट्रोल एट ऑल. ठीक है. And parents were actually happy because I was putting in weight, but after a point it became kind of overweight, and after a point it was a problem. It was never a problem कि मैं move नहीं कर पा रहा हूँ या flexible enough नहीं, but it was a problem. And what I am realizing right now is कि, like you guys, I never got bullied for my weight, but that was only because I had people who were much more obese than me in my class. So they took all the blunt of it. I didn't bully them, of course, because at some level I knew it was the wrong thing to do. And I'm in the same category, so I shouldn't be the one doing it to others. But थोड़ा रियलाइज होता था मुझे कि अगर ये बच्चा मेरे क्लास में नहीं होता, ये दोनों, तो I would be the one who would be the butt of the joke. So in that way, I used to sympathize with those things, and I started, but still I didn't care about anything. तो जिम विम का कभी सवाल ही नहीं है. मतलब रेगुलर एक्सरसाइजिंग भी मैं बहुत कम करता था. देन आई वेंट टू कॉलेज, एंड कॉलेज में भी उतना नहीं होता था मेरे से, मतलब बट इन कॉलेज आई कुड सी दैट आई एम नॉट हाउ आई शुड लुक लाइक. मतलब लाइक यू सेड, मेरा कैसा है, इन केस ऑफ मी, मेरा हाइट थोड़ा कम है. उसके वजह से मेरा प्रॉब्लम क्या होता था कि पैंट का वेस्ट में फिट हो रहा है, बट हाइट के लिए आपको अल्टर करना पड़ रहा है. So that used to be a problem for me. So that way I started to realize कि कुछ तो है, प्रॉब्लम तो है, बट maybe because I was not aware about it that much, I didn't pay attention to it that much. I didn't care to work on it. But in I think कुछ ऐसा ही event या कुछ था, that's I think कुछ कॉलेज का event या कुछ था जिसमें we had to arrange some stuff on the stage. And that was the time when we had to rush and gather things. I don't remember. I think it might be a college festival or something. And that's when I realized कि बाकी लोग भी भाग के काम कर रहे हैं, मैं भी भाग के काम कर रहा हूँ. And I actually was getting more tired than others. And then मैं at some point I couldn't breathe, और मैं ऐसे जाके साइड में बैठ गया. And people were also very caring. ऐसे कोई उल्टा नहीं बोल रहा था. But I sensed some condescension from my friends at that time. और फिर मुझे लगा कि थोड़ा कुछ करना चाहिए. फिर 4-5 friends of us thought कि थर्ड ईयर ऑफ आवर इंजीनियरिंग थॉट की थोड़ा एक्सरसाइजिंग वगैरह चालू करते हैं. एंड कॉलेज के पीछे एक ग्राउंड था, सो वी वुड गो रनिंग. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी बच्चे ऐसे 4 राउंड कंसिस्टेंटली लगा पा रहे हैं ग्राउंड का. एंड मैं एक राउंड ऑफ रनिंग के बाद आई हैड टू वॉक बिकॉज आई कुडंट रन. एंड अगेन दोस फ्रेंड्स वोंट बुली कि भाई तेरे से भागना नहीं हो रहा है एक्सेट्रा. बट द कॉन्डेसेंशन वाज देयर. आई कुड सेंस इट कि सिंपैथी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लुकिंग डाउन अपॉन का फैक्टर आने लगा. So I was like, ठीक है, but that was the time, in a way, gave me more confidence, because what happened was those people stopped doing the exercises after 15 days, and I continued for like 2-3 months. 2-3 months I was consistently going. मेरा थोड़ा pulse rate वगैरह control होने लगा. I could do more than 2-3 rounds. And then again, Surya Namaskars came back into my life because that was the exercise that I was comfortable with. So what I was used to do was run, and then थोड़ा सा yoga कर लो, and that would get me going, and that would get me energized. So ये सब हुआ third year of engineering. Fourth year of engineering, I did some kind of thing, got into a slightly better state, but then again I started preparing for an examination for my post graduation and all. उसमें स्ट्रेट सिटिंग बहुत बढ़ गया था. उस टाइम पे मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था. एंड इन मास्टर्स इट वाज काइंड ऑफ बैड. एंड ड्यूरिंग माय मास्टर्स इज व्हेन कोविड हैपेंड. मास्टर्स के टाइम देन आई वेंट टू होम. और तब क्या हुआ, ironically, that is the time when most people were dormant, and that is the time when I got actively into exercising. Because क्या हुआ कि मेरे घर में everyone is 60+. So what they were telling कि you should do exercises which are related to breathing and your liver capacity, lungs capacity. Lungs capacity is the thing that they were talking about over and over again. And then I started to listening to some podcasts and all. Or like Tanmay Bhatt has said it recently, but at that time someone said ki do the exercise that you are comfortable in. So I remembered the days of Surya Namaskars and all. So what I started doing was कि मैंने calorie fit values वगैरह देखना चालू कर दिया. Then I got to know कि one set of Surya Namaskar is actually beneficial than running.
if you do it consistently without break, मतलब जो बोलते हैं ना कि in a hyper kind of way, then it's actually doing good to your body. And after that, I also got into pranayams and all, and I started doing exercise in that sense. But again, for some reason, I couldn't continue. थोड़े देर बाद वो होना बंद हो गया. And like you said, the weighing scale ना, that thing happened to me in a very big time. फ्लो में मैं बोला अब मैं वेट कम करूंगा. आई हैव मेड अप माई माइंड एक्सेट्रा. और मैंने अमेजोन से खरीद लिया वो डिजिटल वेइंग स्केल खरीद लिया मैंने. And I started working out रोज and calorie deficit and all I started taking care of. 2 वीक्स के बाद मैंने देखा कि 1 किलो से वजन कम हुआ और उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया. बोला मेरे से नहीं होगा. आई डोंट थिंक इट्स फ्रॉम मी. एंड that's when I completely stopped it. Again, when I went to Indore, my roommate was big into exercising. Then it came back into my life again, and I couldn't continue. But this time, when accountability buddies thing was starting, around December, I was thinking I should again get back to it. And again, I chose Surya Namaskar as my way of doing it. And Ria, I think, was the one whose preferred mode of exercise was that. So I started doing that consistently, and this time around, it stuck because even when I was doing it in lockdown, I used to do 52 in a row and I would stop exercising. खाना वाना control करता था. This time I went up to that number of 108. So I was hitting 108 consistently every day. So पहला मैंने 24 से चालू किया, फिर 48, फिर 72. चौथे दिन I decided नहीं, I have to hit 100 again, and I started doing that. And the thing that I had observed even during the lockdown and even now is कि as you age, everyone like Kanan Gill का जोक है ना, everyone has lower back problem without exception. सबको होता ही है. कहाँ भी बेड पे सो जाओ, जमीन पे सो जाओ, होता ही है. When I do Surya Namaskar, that problem goes away. Like genuinely, I have no issue in terms of lower back pain and all. So I started doing that and consistently मैं खाने के ऊपर ध्यान देने लगा. Carbs का प्रमाण कम कर दिया मैंने. Sugar I completely cut off. Caffeine I completely cut off. This I'm talking about January. And things were going well. And one of the things I very distinctly remember happening कि मैं Viviana मॉल करके है थाने में जाता, वहां मैं मूवी देखने अक्सर जाता रहा. So one day I went there and food mall, of course food court they place next to the movie theater because बंदे आके बाद में खाएंगे. That is the design of every mall. तो मैं से जा रहा था ना, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था और मैंने ऐसे देखा पैनकेक्स लगे थे और डिस्काउंट चल रहा था. तो मैंने बोला यार पैनकेक खाए हुए कितना टाइम हो गया ना. और मैंने उस दिन एक्सरसाइज नहीं किया था क्योंकि इट वाज अ मॉर्निंग. सो आई वाज लाइक कि आज टुडे विल बी माय रेस्ट डे. तो आज मैं ऐसा करूंगा कि आज मूवी होने के बाद आई नीड पैनकेक्स एंड थोड़ा चिल करेंगे ऐसे करके. ओके. एंड द मूवी गॉट ओवर. आई गॉट आउट ऑफ द थिएटर. पैनकेक के सामने आया नहीं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को इतना गिल्टी लगा खुद से. मैं बोला यार एम आई रूइनिंग दिस, एम आई शुड आई ईट इट, शुड आई नॉट ईट इट. सो मैंने बोला नहीं खाएंगे. फिर आई केम होम, मेस में खाना खाया, सोया. And evening में I did 108 सूर्य नमस्कार. And at that day, at the end of that day, mentally मेरे को खुद के ऊपर ही खुश हो गया मैं कि I actually had a temptation today, but I was able to resist it. And again, Eklavya Bhai also pointed out in that Tanmay video, that thing stuck in my mind that Tanmay said. What he said was कि you do exercise, one day you don't do, then you don't do, then you don't do, and you think कि ये नहीं होगा आपसे. But he said in some neurological terms, I won't be able to express it in the way that he said. But what he said कि the more times you bounce back ना, the more you are likely to bounce back again and again. So अगर आप एक बार डिसकंटिन्यू करके वापस कंटिन्यू कर रहे हो, फिर भी डिसकंटिन्यू हो गया, then again if you restart, then after some point the restarting also becomes a part of your habit. And आपको हो जाता है थोड़ा ना थोड़ा करके हो जाता है. So for the complete month of January, start of January, I was 80 kilos. After I think I got to around 73, 74 around the end of January. So it was quite a good amount of weight loss. I was feeling more energetic and all. Then in February, there were some personal problems in my family. So I had to look into that. So I just stopped exercising. There were a lot of things on my mind and I just couldn't bring myself to do exercise. But now I'm back in Mumbai since Monday and still didn't exercise. I started today. I did like 24 rounds of Surya Namaskar and I felt better already. But what I'm trying to say is I also do intermittent fasting by the way. मतलब 16-8 wala pattern along with the exercise is what I do. But personally, I don't have any experience in terms of gymming or working with instruments or equipment, etc. But what I genuinely find interesting is कि
मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी नींद पूरी हो जाती है तो व्हेन आई एम गोइंग टू वर्क, बेसिकली इट्स अ डेस्क जॉब ओनली, बट वॉट एवर आई डू, इफ आई एम फ्री तो मेरे को थोड़ी नींद आती है। तो मुझे लगता था कि मे बी बिकॉज माई स्लीप साइकिल इज सो फास्ट, या if I am not getting proper sleep, then I'm not able to sustain myself, and that's why my energy is depleted. But when I was doing Surya Namaskars and exercising regularly in month of January, that's when I realized that whenever I'm exercising, that actually doesn't exhaust me, but rather energizes me for the rest of the day. Correct. Correct. So that was actually very interesting to me. I thought कि exercise करने के बाद तो भाई body थोड़ा दिखेगा तो क्या ही होगा ऑफिस में, but actually it works the other way around. Because you have done it, then you are able to do it some more. And one another thing that has been my observation even in my previous job and in my current job, कि अगर if you have a bad day ना, then exercise is the best way to combat it. बिकॉज माय मैनेजर आके मेरे को ऐसे ताने मार रहा है ना, तो अगले दिन मैं ऐसे पूरा फोकस करके एक्सरसाइज कर रहा था, थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, एंड इवेंचुअली इट स्टार्टेड गोइंग अवे। आई आल्सो ट्राई हम टू लिसन टू बट हम हमेशा उल्टा करते हैं, जस्ट वांट टू से हम हमेशा उल्टा या करते हैं। हम चिकन टिक्का मसाला उसी दिन मंगाते हैं, हम्म, जबकि हमको उल्टा हाँ करना या चाहिए। मतलब ये उल्टा करना चाहिए या हमने भी Like, नोटिस किया है, जब भी स्ट्रेसफुल डे होता है वर्क पर्सनली, वी एंड अप ट्रीटिंग अवरसेल्फ कि मतलब चलो अच्छा खाना ही खा लेते हैं। सेल्फ या पिटी पे या चले या जाते हैं एग्जैक्टली हम कि finding a सेल्फ way पिटी हाँ पे चले हाँ जाते finding a way to add dopamine into your body. हाँ Oh, हाँ it can हाँ happen through exercise, but because we are so या used to it या being करेक्ट the easier way, that करेक्ट food, करेक्ट putting food into your mouth. सो यू वांट दैट वन थिंग टू हैपन राइट इन द डे, दैट वन थिंग कैन बी एक्सरसाइज, बट वो वन थिंग हम बनाते हैं वो क्लिक ऑफ द बटन। तो और अनदर थिंग अबाउट माइंडसेट व्हेन एकलव्य वाज टॉकिंग ना, तो उससे मुझे याद है वंस यू गेट इनटू द हैबिट ना, सो योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू डूइंग दैट। मतलब आपको दिन में एक चीज करना है, करेक्ट बाकी सब एक करेक्ट सेकेंडरी। तो दैट बिकम्स लाइक इन माय केस व्हाट यूज्ड टू हाँ हैपन कि मैं म्यूजिक सुनते सुनते एक्सरसाइज करता था, बट मेरे पास वो वायर्ड वाला ब्लूटूथ का हेडफोन होता था, तो सूर्य नमस्कार में यू हैव टू गो डाउन कम्प्लीटली, देन वो पूरा ऐसा वायर होके आगे आ जाता था मेरा। सो आई वाज लाइक कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, इसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। सो वो ईयरबड्स आई फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वो ब्लूटूथ वायरलेस वाला मैंने लिया। देन होने ये लगा कि मैं ऐसे हाथ ऊपर कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट पोज ऑफ सूर्य नमस्कार, तो हाथ उससे ब्रश हो रहा है और गाना पॉज हो रहा है। सो मेरा इतना चटक गया, फिर मैंने गाना सुनना ही बंद कर दिया। आई डोंट नीड एनी म्यूजिक टू डू एक्सरसाइज, मैं बस करता जाता हूँ। इनिशियली आई यूज्ड टू फॉरगेट काउंट, दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू द म्यूजिक इन द फर्स्ट प्लेस। नाउ व्हाट आई डू इज जस्ट कोई भी ऐसा रैंडम लेट्स फ्रीडमन का साइंस पे पॉडकास्ट चल रहा है एआई का, एंड बाय द टाइम साइड में थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो वंस यू डेवलप दैट हैबिट ना, इट मे ब्रेक, जैसे कि मेरे लिए अराउंड 1 मंथ हो गया कि वो ब्रेक हो गया है, बट when I did it today na, then I realized कि yeah I can do it again. या So that is the thing कि you should just restart। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, इतने दिन नहीं हुआ अब कैसे अब ही तो होगा, you हो गया, just अब तो कर तो छुट्टी दो दे ना, दो। अब हो गया। हाँ, हाँ, so that is the माइंडसेट more पे मुझे important। सिर्फ एक बात और एक बोलनी है कि जैसे आई वाज अ वेरी डिलिजेंट कंज्यूमर ऑफ चाय एवरी डे, और जब मैं एक दिन बीच में मिस करता था तो मेरा सिर दुखने लगता था, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लगाया कि मेरे को जरूरत है तब जाके सर दुखना बंद होगा, बट नाउ दैट आई एम नॉट हैविंग इट, तो आई डोंट वेक अप विथ कंप्लेन्स ऑफ बॉडी एक और हेडेक। Yeah, तो कुछ नहीं, मतलब बॉडी को जब 10-15 दिन मैंने बताया कि ये अवेलेबल नहीं है पदार्थ, तो बॉडी लाइक ओके मैं चला लिया काम। बट अगर yeah, yeah, इफ आई अगेन स्टार्ट फॉर लाइक 2-3 डेज, अगर मैं फिर से पी लूं और चौथे दिन ना पीऊं, तो वही मतलब बेसिकली विड्रॉल सिम्टम्स एंड ऑल दैट, राइट। तो बॉडी इज लाइक ठीक है भाई, तेरे को नहीं पीना चाहे मैं देखती हूँ 15 दिन में, मतलब बॉडी इज वेरी कूल, आई विल फाइंड अ वे अराउंड इट। पहले जो मैं मुझे ऐसा लगता था कि चाय पीने से मेरा बॉडी एक कम हो रहा है, वो अब होना बंद हो चुका है। तो या इट्स वेरी nice। या और there were a couple of things जिनमें जो आपने कहा, एक तो you found your exercise सूर्य नमस्कार is your thing, क्योंकि to be very frank I find gyms boring। मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, मेरा बस चले तो मुझे स्पोर्ट खिला लो भाई, मैंने बहुत खेला है, मुझे स्पोर्ट जितना मर्जी खिला लो, बट अब प्रॉब्लम ये होती है जैसे आप बड़े हो जाते हो स्पोर्ट के लिए आपको एक और लोग, और फुटबॉल खेलना है तो उसके लिए 6 लोग मिनिमम तो और चाहिए, वो नहीं हो करेक्ट। पाएगा। ठीक है, बैडमिंटन खेलना है तो एक और तो कोई चाहिए। तो दैट इज वन इशू। तो बट इफ यू फाउंड योर दिस थिंग, लोगों का रनिंग होता है, वो होता है जिमिंग। अब मुझे तो पहले बोरिंग लगता था, बट ट्राइंग टू
डू दैट कि हाँ कुछ मैं उसमें कुछ पॉडकास्ट And सुनूं या कुछ करूं. yeah, and सेकेंड यू and सेड सेलिब्रेट योर विंस. मतलब आपने उस दिन बोला कि पूरा ही आपने पैनकेक मना कर दिया. मैं कह रहा हूँ लेट से सब में इतनी कन्विक्शन ना भी हो, अगर आप लेट से अपनी का जोमेटो खोल के 2 बर्गर खाने वाले थे, अगर आपने उस 2 को 1 भी कर दिया है ना उस करेक्ट, दिन के लिए, वही correct. बात है. Yeah, सेलिब्रेट बहुत दैट बराबर. ऑल्सो. मतलब उसको सोचो कि ये Yeah. भी आज इम्प्रूवमेंट है. डोंट गो इनटू अ स्पाइरल कि भाई मैंने बर्गर खा लिया. और एक अग- बर्गर के साथ सेलिब्रेट मत करो उसको. हाँ, तुमने बोला ना Exactly. तो वो है, और एक अगर कैसे आप 2 खाते हो, आपने सोचा था मैं 2 खाऊंगा, 2 को अगर आपने करेक्ट, 1 कर लिया तो वो इट्स ऑल्सो बिग थिंग. ठीक Also, है. करेक्ट. you know what I think is the biggest reward? Matlab, everyone who has gone through some kind of weight loss or exercising journey, when you walk up to people and unprompted they say you are looking better or are you working out na? That just makes your वैलिडेशन day. भाई, उसका That डोपामिन validation, अलग validation, लेवल पे होता है. आई 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 वुड लाइक टू पॉइंट आउट, इसका ये भी होता है, ऑपोजिट एंड भी होता है कि व्हेन यू yeah, आफ्टर यू लूज अ बंच ऑफ वेट एंड देन यू पुट गेन इट इट. बैक अप, आई लाइक हाँ अरे हाँ तू तो yeah, ये yeah, कर रहा था, अभी क्या हाँ वेस्ट कर दिया तूने correct, हाँ पूरा correct. वो. हाँ. करेक्ट करेक्ट. And करेक्ट these doing it for others, as Eklavya said, is the worst Correct, thing correct. that you It's can करेक्ट the do. worst thing that you करेक्ट. can वो do. जब वैलिडेशन आता है उनका, it is really good, it feels really good, and it might motivate you also, but जब भी उनका the opposite end But you also, have to, it will hit, you have to इट keep इज your लाइक it will सोशल hit. मीडिया. इट इज लिटरली लाइक it, सोशल This मीडिया. applies to And वही compliment as देने वाले Anmol कम भाई. रहते हैं, तुम्हें उल्टा कम. बटरने वाले ज्यादा होते हैं. करेक्ट. बहुत Right. ज्यादा है. Yeah. एज अनमोल And भाई I've से, seen, Always. अप्लाइज टू एवरीथिंग. मतलब ये जो yeah, इसके बारे में कि उनका जो वैलिडेशन भी है ना, वो भी एक ट्रैप है. जैसे एक मतलब अगर इफ यू गो ऑन सोशल मीडिया आफ्टर अ वाइल ना, तो आई हैव नोटिस दिस कि पीपल आर नाइसर टू यू बिकॉज दे वांट यू. मतलब इन अरे तू कहाँ था भाई, Around. They है ना. want you around. तो देन यू दे विल गिव यू Mhm. दैट सस्ता वैलिडेशन और ज्यादा, कि देन दे कैन ग्रैब यू. एंड व्हेन अब तुमने ये तो सीरियसली ले लिया कि तू अच्छा दिख रहा है, तो अब वो जो बाकी बकवास करेंगे वो भी सुनना पड़ेगा. तो वो भी सीखना तो पड़ेगा. Correct. तो इट्स बोथ वेज, तो वो दोनों तरफ से. मतलब you have to keep yourself in check. मतलब okay, it is good, but हाँ, स्टेबल इन this ऑल is not सिचुएशंस where I. बेसिकली. Yeah. बिल्कुल ऊपर भी नहीं गिरना, नीचे खाई में तो भी नहीं गिरना, वो ऊपर भी सब नहीं जो उड़ना. बोलते हैं ना कि मतलब बैलेंस रहना चाहिए और हाँ. ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा, वो बहुत क्लीशे लगता था पहले, बट सच बात है यार. मतलब पर या मतलब वी हैव गॉन टू अ लार्जर Even again coming back to that Tanmay episode, what he said some numbers ki this was the weight he was targeting and he had achieved like 50-60% of that. So he was staying in Bangalore at that time. So when he came to Mumbai, people were really appreciative of that. He is doing well. But he was like, yeah, whenever someone was appreciating or complimenting him, he was always reminding him that this is not done. This is just the part of the journey that I've achieved. I have to work out somewhere. So like the Sumit said, थोड़ा self check थोड़ा enable रखना चाहिए वहाँ पे. तो check box फिट रहे. और एक चीज और जो जिनमें आपने बोली, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज वाली चीज, कि यू थिंक कि आपने एक्सरसाइज करी Yeah, है, अगर कि ये तो अब मैं थक गया हूँ या देयर इज अ स्प्रिंग इन योर स्टेप थ्रू आउट द डे व्हेन यू हैव वर्कड आउट, और यू लाइक कि ये अगर मैंने सुबह कर लिया ना, अब मेरा दिन जो भी हो, मेरा ये नॉन नेगोशिएबल चीज हो गई है, अब मैं देख लूंगा. अब गाली भी सुनूं मैनेजर से, वो सब अलग चीज है, बाद में हो जाएगा. एंड सेकेंडली एज यू सेड, अगर वो नॉन नेगोशिएबल होता है ना, वो आपके डे में अकोमोडेट होगा. फिर आप यू विल वर्क इन सच अ वे दैट ओके यू नो कि अगर आपको 5 to 7 जाना है जिम, जाना ही है, नॉन नेगोशिएबल है, इफ यू आर दैट कन्विक्शन, आप अपना काम उस प्रोडक्टिविटी से करो कि देखो भाई उस टाइम से मुझे खत्म करके correct. जाना है. अगर आप में वो नहीं है ना, आप अपना काम खींचोगे, यू विल नॉट बी दैट प्रोडक्टिव कि हाँ ठीक है देखेंगे अगर जा पाए या नहीं जा पाए. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स बेसिकली, कि अगर आपका वो कन्विक्शन बन गया है तो दैट हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी एंड दैट हेल्प्स यू इन टाइम And मैनेजमेंट ऑल्सो. it मतलब your persona kind of थोड़ा थोड़ा change होता है. Like I हाँ. live on the fifth floor ना, so when I was in habit of regularly exercising, I never took the lift. I was like चल के जाएंगे, क्या क्या होता है. Just a small change कि जाके देखते हैं. तो हमारे पूरा mindset अगर उस direction में बढ़ना चालू हो जाए ना, तो it's better for you also. हमारे ऑफिस में जो स्टेयर्स है ना, उन पे हर स्टेयर पे कैलोरी वो लिखा हुआ है कि आप एक चढ़ोगे तो 0.2 Nice. ऐसे, तो हर 0.4 कैलोरी, 0.6 कैलोरी, उस पे एक स्ट्रिप लगी हुई है ऐसे. तो बहुत सही लगता है. तो बट या थैंक यू टू शेयर फॉर शेयरिंग जितने भाई. मतलब होप यू कंटिन्यू योर सूर्य नमस्कार जर्नी. एंड हाँ मैं नन. वो उन्होंने जो भाई हाँ दिलजीत भाई बोलो बोलो.
इक्रस ना बन जाइए सूर्य नमस्कार के चक्कर में. डोंट फ्लाई डोंट टू फ्लाई फार. टू वाओ, क्या बात. पता नहीं 200 वो सही करने लग गए. ऑल्सो लव यू. बिल्कुल ही सूर्य के साथ मिल ही गए. क्लोजर टू अब एक आप क्लोजर टू होम हनुमान ना बन जाए, खा ना ले धरती हम पे। समझ के खा ना ले, मैं तो वो बोलने वाला था. ओके. कैलोरी नहीं है, खा ही लेते सूरज को. नंदिनी, आप स्टार्टिंग से हो और चुप हो. अब आप पे स्पॉटलाइट मार रहे हैं हम, अगर आप हो. नंदनी को वो कर दो, कोई पिन कर दो अगर कैमरा नहीं भी है तो. अरे चुप रहो यार, क्या? नहीं तो आज नहीं, मुझे दिल्ली वाली मजा आ रहा नंदिनी है, है तुम यहाँ. सबको सुन के मुझे मजा आ रहा है, बहुत सीखने को भी मिल रहा है, बिकॉज बोलो. कपल ऑफ थिंग्स आई वाज नॉट अवेयर ऑफ. तो मतलब दिस वाज क्वाइट, क्या बोलते हैं, एनलाइटनिंग सेशन. तो weight loss, in terms of that, if I have to talk about it, then as a kid I was not overweight or anything like that. In fact, I was underweight, and because of that, I realized around the time I was in college that I'm anemic and I'm underweight, and I was the 47 weight kudida person. So, ये गाना तो शेयर करना है. so, so that was not good. Actually, I don't think I ever paid attention to my weight at that point until it was pointed out to me that okay, you really need to do something about this. And that's when my mom also started helping out in terms of adding food that would help me get rid of the anemia, and also put on a little bit of weight. So weight was not a problem for me until maybe 10 years back. That's when I started putting on weight, and it's not like I started eating more suddenly or anything like that. It's just that when you start working and you start meeting people outside and you start going to restaurants, it's just that what you eat changes. That's it. Because until I was eating 3 times a day at home, I was fine. And my weight was consistent. It's when I started eating in restaurants, and also what I was eating mattered. You जैसे हमारे घर में क्या होता है, तला हुआ खाना नहीं बनता, ठीक है. Deep frying stuff is like a festival. It almost never happens. So because of that, going out and eating fried food was like the most exciting thing to do. Or in my case, my obsession with desserts was the biggest problem. So that that was a problem. And then at one point I started working from home, and my business was baking, so which still is. So that didn't help either, because I didn't have a choice. It's not like I was eating the whole tray of brownies or anything like that. But because you have to test recipes constantly, you do end up consuming more sugar than you probably should. And that sort of was not nice, because I had very easy access to what I wanted to eat. So I realized that I have to get it out of the house as soon as possible. So then, even if I was making a trial batch, I would message people and say, "Ki, le jao." So that helped. And I think a main thing that I realized at one point when my weight was fluctuating a lot, and I even went to the doctor and got tests done and everything, I realized that nothing was wrong with me actually. And it's only later I realized that it's stress. And Correct. this is a thing that I didn't know existed at all. This is a
problem I didn't know, and I was eating all. I was like I was saying, I was at home, so I was eating the healthy food that I was eating when I was in college, but movement had reduced. You know, जैसे पहले मैं बस से जाती थी ऑफिस, तो obviously there's quite a lot of walking that you end up doing. वो नहीं हो रहा था. Also, I grew up in a very cocooned household, so sports was never encouraged. You know, it was like you have to be home by 5, you can't go anywhere. So I have never played any sport growing up except maybe a little bit of, cricket. So that sucks, and I feel bad that I never got to experience that. Like when you guys talk about कि मुझे जिम जाना पसंद नहीं तो मैं स्पोर्ट खेल लेता हूँ, I wish I had that. And then where was I? Sorry, flow it टूट गया. Yeah, so I was at home ना, तो वो बोल रही थी मैं. So हो ये रहा था कि I didn't understand I was under stress, and then I went to a therapist to sort of talk about it, figure out what to do, and she turned out to be काफी टट्टी. So she told me that how it's my age to get married, and that is the solution to all my problems, Added to and the that stress. I should pray to God. And I'm like, ये थेरेपिस्ट बोल रही है? अरे हैं? हाँ, मेरा ये थेरेपिस्ट बोल रही है? हाँ थेरेपिस्ट बोल रही है. I'm like, यार भाई जो मेरे माँ बाप मुझे ऑलरेडी घर पे बोल रहे हैं वही सुनने के लिए मैं पैसे क्यों दे रही हूँ? मेरे- मेरा भी जो So पहले 4-5 एक्सपीरियंस वाज लाइक दिस ओनली. एक ने तो ऐसा कुछ बोल दिया था कि अरे वेट बढ़ रहा है, उसमें क्या है, जाके एक्सरसाइज करो. क्या ये क्या ये? solution? Oh, आप really? कैसे क्या सोच अरे रहे हो? मेरे पापा कब से थेरेपिस्ट बन रहे तुम्हें डर लग रहा है? डरना बंद कर दो. हैं? डर खत्म हो जाएगा, तुम डरना बंद करो. अरे विल मन्यू का पर्सन बाप तुम यहाँ. बोलता है ना, हाँ बनी का. मन्यू का बाप बोलता है ना, बेटा तुम सुबह उठ के सुबह तो उठ देखो, के तो 8 देखो. घंटे ठीक हो जाएगा. या पानी पिया करो. आई थिंक वो सबसे बड़ा है कि पानी कम पी रहे हो तुम Yeah, and the शायद. thing is now my dad started like at that point stress inducing person mainly was my dad. So he made it worse, saying things like, तुम exercise ज़्यादा किया करो, and would like, take a look at your plate कि तुम क्या खा रही हो. And I was the sort of person who I'm telling you, जब से मैं मतलब कॉलेज टाइम से अब तक I eat the same amount of food. That has not changed at all. So अगर मैं एक रोटी खा रही हूँ या 2 रोटी खा रही हूँ, at a time, it has always been the same. You know, it's just that now, in the last few years I've realized कि रोटी से फर्क नहीं पड़ रहा, उसके साथ में क्या खा रहे हो उससे फर्क पड़ रहा है. But the thing is, since I didn't change anything else, and I was the sort of person I still try to be, where I eat all my meals at one time every day, so it was that kind of discipline. So I just couldn't figure out what was happening, only to realize it's stress, and the therapist didn't help. And sadly, I did not go to another therapist at that point, which was wrong on my part. It sort of bogged me down, and I started feeling really horrible. So that sort of continued for a long time. And then at one point, I got married, and I moved far from my parents. And that meant that now, I am taking care of everything, like what I'm eating and all those things. And thankfully, my routine continued. I didn't change anything. I tried to cook the same things my mom used to cook. Even if I tried new recipes and things like that, it was just exciting for me. But weight मेरा कम नहीं हो रहा था. So then I started figuring out what can I do about it. In the past, I had tried going to the gym and all that. It didn't really work for me. I think just psychologically it was a block maybe.
So I started doing dance workouts, and I started doing yoga, and I started walking. And these things helped me. I would juggle between the three. These things helped me a lot. Problem started after lockdown. I think sabka yahi hai. That is when, because you are doing sare ghar ke kaam, and you are, cooking and all those things, so I would feel so tired कि उसके बाद I wouldn't do अलग से exercise. And because बाहर से आप खाना नहीं मंगा सकते हो, so you try to make nice things at home, not the usual khana. So I started making these elaborate meals and all that. So it didn't really help. मैं घर पे पिज्जा बना रही हूँ, बर्गर बना रही हूँ from scratch. I'm making bread and all that. मजा बहुत आया, लेकिन फिर वेट भी बहुत आया. उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, उसी टाइम पे I had a shoulder pain. So it was quite bad, and for that I had to go for physio, and then I was told to rest. So I started making food, which was very easy to make, just a real, and most of it is carbs heavy, right? Khichdi and all those easy things to make. That didn't help again with weight loss. Finally, and the thing is, I think what I realized throughout all of this is that I have to make sure that my mental health is fine for me to start thinking positively about my body. So I am still trying to figure this out. I haven't figured this out, and I'm hoping at some point I will have a healthy relationship with my body. And I think, like everybody else said, it doesn't help when people point it out to you. It's like, I'm like, यार मेरे घर में आईना है, मुझे पता है मैं कैसे लग रही हूँ. Stop telling me, every single time कि अरे you've put on weight. And my brother's wife is thin. Okay, and I am fat. So हम जिस भी family function में जाते हैं, they look at both of us and they tell her, बेटा खाना खाया करो. And मुझे बोलते बेटा खाना कम खाया करो. And we look at each other and we are like, क्या लोग हैं मतलब, it's like you can't ever do anything right now. Like I was telling, I think I was having a conversation with the girls once, कि when I was thin and I was told कि तुम ठीक से खाती नहीं हो क्या, it was insulting for sure. I didn't feel good. But the way people started treating me when I started putting on weight has been a complete other level of humiliation. Yeah. And oh my God, and like Sumit was saying, or Eklavya was saying, हमारे community में कि they look at you, nobody asks you how you are. The first comment is कि अरे मोटे हो गए हो. And I'm like, oh my God, and the funny thing is when you meet these uncles and aunties who are probably much bigger than you are, weight wise. And I'm like, मुझे लगा था उम्र के साथ, you're supposed to become wise, but what is happening to these नहीं people? वो they are like So, हमारा तो हो गया ना. You are going through the societal crisis now. उनका that's they are coming कि हमारा तो हो गया, अब तुम कुछ करो ऐसा. exactly. And then, obviously, before you get married, it's like, ladka nahi milega, those kinds of comments, which a lot of, people around me have also got. Um, so I had not become that overweight at that point, but afterwards I did. And abhi bhi, when I meet them and all that, it's like a constant thing ki, अरे तुम लोग are you not thinking about having a kid, and are you not thinking about this or that, and then oh you should lose some weight, otherwise it's going to be an issue. And I'm like, बहन मुझे पता है. ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रही हो आप मुझे. So it's like never ending, especially for girls. It's never ending. Whatever you do from the time you're a kid, what you study, what you wear,
your body type, everything is about ladka nahi milega. That's it. So that is the मिल गया तो बच्चा नहीं होगा फिर उसके हाँ, बाद सब exactly. So, I mean, I know for a fact that because of the way I had a very matlab, disciplined routine in terms of diet, that is not where my problem was. You know, my problem was that I was not exercising enough. And as you grow older, the tendency to lose weight is more difficult, and in the case of women hormonal changes are crazy. Like I don't think I can go on any kind of diet without consulting a doctor. I mean, ideally that is the best thing to do for anybody, men or women, but especially for women hormonal changes are so crazy that there is no way that you can randomly follow a diet and see results or even retain those results. So मेरा बस यही experience रहा है कि I still don't know exactly what works for me. I'm still figuring it out. So I'm hoping कि if we have more of these conversations, maybe we'll be able to figure it out. Yeah, I think And this should be a of regular. course, yeah, and maybe Yes. read more about it Yeah. individually. And just one more thing I wanted to say was that the sad thing is, whenever I look for any kind of data, right, about in terms of women's health, um, what diets work, or anything else related to weight gain or weight loss, I'm just not able to find much. It's barely anything there. So, in terms And of even related to trying to Indian women also, it's not Oh, much, in na. So Indian women, तो it's like almost nil. ठीक है, yeah, तुमको मिलता ही नहीं है. So there is no way to know कि which diet will work, what kind of foods should I consume more of, less of. एक जगह पे लिख रहे हैं कि carbs हटा दो तो hormonal changes हो जाएंगे, completely नहीं हटा सकते. So there are so many things. So at this point, I'm trying to eat less carbs, more protein, and I haven't cut out on sugar completely because my Kali, yeah. problem is का बिजनेस है. मेरे को लो बीपी का भी प्रॉब्लम है, तो मैं completely वो हटा भी नहीं सकती. तो when I know that okay at this point I have to have something sweet, तो मैं कुछ खा लेती हूँ. I guess the good thing also is that I bake healthy things, so I'm able to control the amount of sugar I use, what kind of other ingredients I'm using. So those things help me. But yeah. Yeah, diet related भी even when I was heavily into the keto diet and people women were asking me कि यार कैसे करना है, मैं बोलता हूँ कि तुम कंसल्ट कर लो बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं इसमें. तो Yes, जस्ट very heavy chances. हाँ, Yeah. तो जस्ट हाँ. बिकॉज And it's keto has hard during also periods also to continue keto Yes, with the has diet. Yeah, very different impact on men's body and women's body yeah, also. yeah. So I'm just क्योंकि saying, liver तो definitely. उनको तो And liver का भी and इन so बहुत जनरल many बोलता हूँ. हाँ, and so many women ना, the thing is रेगुलर मेडिकल चेकअप्स नहीं कराते, मतलब मेन एंड वुमेन. तो वुमेन में क्या होता है कि सडनली इफ यू चेंज योर डाइट, तुम्हें पता ही नहीं है तुम एनीमिक हो, और तुम फिर मतलब आई न्यू दैट आई वाज एनीमिक आफ्टर अ पॉइंट, एंड दिस इज आफ्टर आई हैड फेंटेड ट्वाइस इन रैंडम प्लेसेस. बट even after I have known about it, right, there have been times when it's been so low that I have fainted. So it's just that how much ever क्या बोलते हैं precautions you take, these things will happen. So if you're changing something as major as what you're eating every day, तो definitely you have to consult somebody. Thanks, Nandini. Like I had couple of मतलब I had those questions written, as you rightly mentioned. पहली बात तो like in India in generally we don't have that whole regular checkup concept which I've seen in the West. I mean from TV shows and all. Like for example, even dental for that matter, they
have, they do regular dental checkups and all. We only go when we have a problem, right? The biggest issue, and I can totally relate with you, is there is so much information on the internet now. You just don't know who is right, who is not right. Like, even if you have to look up a nutritionist, obviously the marketing is such, like they will put 20 case studies ki we have changed these many clients and all. It is just so difficult कि आप, like, you cannot start and stop with every nutritionist or everybody. So And that is, also, हाँ, nutrition data is constantly updating now, or our general practitioners are not the best nutritionists or yeah, dietitians. they are मतलब not. उन लोग का नॉलेज ही, वो लोग जब एमबीबीएस से बाहर, एमडी एमबीबीएस से बाहर निकले, तभी तभी आके रुका है उनका. So they are not up to date at all. तो बिगेस्ट इशू है दूसरा ये, लाइक जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, किसी ने बॉडी बना ली, वो अपना एक पेज खोल के वो अपना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कर लेता हूँ, उसके पास कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कुछ नहीं, ठीक है, उसने अपनी जर्नी कर ली एक, ठीक है, बट वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मेरा हमेशा यही रहेगा, एज सुमित ऑल्सो सेड, कि जनरल प्रैक्टिशनर अगर कोई प्रॉपर, इन इवन इन द बिग हॉस्पिटल्स लाइक Fortis, Apollos and all, there's always a nutritionist that is available for consultation. Maybe that can be, nutritionists don't need a medical degree, dietitians do. dietitians do. हाँ, तो उन दोनों में तो वो ये कर लेना, बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट कोई भी बन सकता है, डाइटिशियन कोई भी नहीं बन सकता. जस्ट जस्ट चेकअप विच इज एंड विच. तो अगर फर्क आपको क्या, करना ही, व्हाट वुड बी द डाइटिशियन मोटा इज मोटा एबल टू डिफरेंस? प्रिस्क्राइब यू स्टफ इफ नीड ओके, बी. न्यूट्रिशनिस्ट इज नॉट एबल. न्यूट्रिशनिस्ट आपको ना वो देगा काइंड मील ऑफ, प्लान वगैरह वो हाँ, पूरा. मील ओके, डाइटिशियन. बट आई थिंक दोनों केस में टेस्ट होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, बट वो क्लियर कर लेना, बिकॉज वन इज अ डॉक्टर, हाँ, वन इजंट. तो करेक्ट. ये एंड कर इट इज लेना उसका. ऑलवेज गुड कि आप जो कह रहे हो ना कि व्हेन, स्पेशली व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज वर्किंग फॉर योर बॉडी, इट इज ऑलवेज गुड. वो टेस्ट करेगा, वो देखेगा व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर योर बॉडी. सो that is definitely one way to go about it, but seeking professional help, I think, is a good path forward in these situations. बेस्ट वे आई वुड से, इफ एनीवन जस्ट वांट्स टू स्टार्ट, इज बहुत फ्रिक्शंस ऐड करते हैं अपनी, लाइक ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा. सिंपल इज, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, इज जस्ट लिमिट योर कार्ब्स, ऑब्जर्व व्हाट टाइम यू आर ईटिंग. स्टार्टिंग में तो उतना ही करना है, लाइक डोंट रेस्ट्रिक्ट फॉर नाउ. जस्ट ऑब्जर्व व्हाट टाइम यू आर ईटिंग, और आर यू इम्पल्स ईटिंग, एंग्जाइटी की वजह से खा रहे हो या कैसे, चटर पटर जो भी खा रहे हो. जस्ट ऑब्जर्व दैट एंड ट्राई टू लिमिट इट टू 2 windows a day. इट्स 3 windows की आदत लग चुकी है, चलो 4 windows की आदत लग चुकी है अपने को. तो सुबह के और शाम का चाय, बट एटलीस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 windows तो हो जाएगा. एंड फिजिकल एक्टिविटी मस्ट, आई नीड टू स्टार्ट अगेन. नहीं तो मैं, आई लव्ड गोइंग टू द जिम. वहां पे जाके ही लाइक आई फील कि कुछ तो करना है अभी यहाँ. मैं जाता था, केटल बेल्स ही मारता था, मेरे बेस्ट मेरे लिए वही थे. ये और मेरे ये दिखाए थे मुझे, सप्लीमेंट लाए थे वे. तो कीटो पे यू डोंट गेट मोर सप्लीमेंट्स, सो आई टेक मैग्नीशियम. दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. हम्म. ठीक. सेम दिखा मैग्नीशियम का, बट वी बिलीव यू. जिंक, ये रेगुलर नहीं होता, ये कुछ कुछ, ये L-theanine करके है, ये तो फोकस के लिए होता है. मल्टीविटामिन एक है, ये पोटेशियम है. एक ये फिश ऑयल है. ये क्या हाँ. दुकान लगा रखी है? डॉक्टर से मिल लो एक बार. दीज आर प्रिवेंटेटिव. ये और दवाई नहीं ले, मैं पहले ही बहुत दवाई लेता हूँ, और दवाई ना लूं इसलिए ये दवाई आया. But are these safe, Sumit? What is your, These like, are general relatively safe. मतलब okay. these are the things that you should ideally get in your diet, but most of us don't. Yes. Okay. Like जिंक, मैग्नीशियम और जिंक की बहुत कमी होती है अपने जनरल इंडियन डाइट्स में भी. So whenever I've observed, or whenever I do take zinc or potassium, I feel much better that day. Magnesium not so, it's okay. मैग्नीशियम का इतना डिफरेंस ही नहीं है. मेटल खाने शुरू कर देते हैं अब. मेटल्स की कमी है बॉडी में, आयरन की कमी जिंक से का रोड कहीं फेंट जाके हो चाट रहा है रहे. आदमी.
पोटेशियम भी बहुत कम है अपने इस डाइट में। अरे आपने पोट बनाना बंद करा दिया यार। बनाना में इतना नहीं होता जितना जितना स्पिनच में होता है। स्पिनच खा एडवर्टाइज्ड लो। बनाना में स्पिनच एडवर्टाइज स्पिनच बहुत में ज्यादा है। स्पिनच में आयरन ज्यादा नहीं होता। डेसिमल का फर्क था इसलिए वो डेसिमल का मिस्टेक था इसलिए वो पॉपॉय पॉपॉय का कार्टून उसकी वजह से बना। बट स्पिनच में उतना आयरन नहीं होता बट पोटेशियम होता है। पोपोए कैरेट्स का का भी बेस ही ऐसा ही गलत है। स्टोरी है ना। कैरेट्स कैरेट्स का तो भी यही सुना है, विटामिन यही सुना है मैंने तो, जो सुना है। नहीं, कैरेट्स का आंखों का, आई माइट बी डाइवर्सिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट आंखों के लिए अच्छे होते बोलते हैं ना कैरेट्स। हाँ हाँ नहीं हाँ। नहीं, वो तो नहीं वर्ल्ड वॉर 2 का वो वर्ल्ड रूमर वॉर टू का फैलाया था। प्रोपागेंडा था। या प्रोपोगेंडा था दे वो। आर गुड फॉर आइज बट नॉट दैट मच। बट क्या वो प्रोपेगेंडा है ये, मुझे नहीं पता। मेरे को आईज ही, मेरे को सब बचपन से जर्मन्स पता को है। हाँ जर्मन्स को एनिग्मा था ना, जिसकी वजह से हाँ स्पाई करके वो डेटा हाँ अक्वायर हाँ। करते थे एनिमी टेरिटोरीज का। सो टू मिसगाइड द एनिमी दे यूज्ड टू से कि हमारे सोल्जर गाजर बहुत खाते हैं, जिससे उनका विजन बहुत स्ट्रांग हो रात का विजन अच्छा है। रात का नाइट विजन आता है ऐसे करके। ये तो सो वही वाली इवेंचुअली वही पूरी इट्स स्टिल मार्केटिंग है ट्रांसलेटेड। जो हाँ हाँ, सीरियल्स ने ब्रेकफास्ट के लिए करी है, कि ब्रेकफास्ट करेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील, करेक्ट। क्योंकि सीरियल्स को बेचना था अपना, सीरियल्स उसका बेसिकली। मेन वही है। मेन ये था कि लड़कों का मैस्टरबेशन कम कराना था उसको। वो इसलिए केलॉग्स कंपनी वो उसका फिलॉसफी बहुत यही था सही। कि ये कम अरे कराना है उसको। आई एम ऑल्सो बिग सप्लीमेंट ये ऑफ कोर्स। मैं भी मिनरल करेक्ट। तुम विटामिन पीछे रहे अगर नंदनी, यू आर नॉट बीइंग अ नेचुरल गुड बी। शेट्टी राइट नाउ। नंदिनी क्या यार, नेचुरल ब्लर सी। हटा, ब्लर हटा, दिख रहा नहीं कुछ भी। ब्लर है क्या वो? नंदिनी को अगले टाइम मिलेंगे तो पहलेंगे, पूछेंगे ये सप्लीमेंट कहाँ है आपके? सप्लीमेंट कहाँ पे? सप्लीमेंट नहीं दिख रहे। चल क्या रहा है ये? शेट्टी क्लब कब खोला दुकान इतना बड़ा? विटामिन विटारी क्या नाम है? ये क्या मॉडल कर रहे मॉडल हो बन भाई? जाओ। नहीं दिख रहा कुछ। बस तेज दिख रहा है सप्लीमेंट का भाई, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे 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 करके ऐसे पकड़ो। व्हाट इज सफेदी सडन की सप्पल? चमकार हो रही है। सडन सप्पल हाय सागर। दिखेगा। मल्टीविटामिन ये हर्बल लाइफ तो नहीं है ना भाई? नहीं नहीं, न्यूट्रीलाइट, विटामिन बी, विटामिन सी, फिर बायोटिन, वो हाय बायोटिन भी है, वो नहीं दिखा। बायोटिन, वो तो बाल के लिए है। वाह, ये बाल तो और कंपटीशन हो गई अब। बालों बाल वाला और तो मुझे भी बताओ यार, बाल बाल और वाला बहुत कम आई टेल है। यू दिस कि सप्लीमेंट्स क्यों, मेरे डैड तो बाप रे, वो तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आई एम द लास्ट वन इन माय फैमिली टू हैव इनकलकेटेड इट। डैड एंड मॉम हैव बीन टेकिंग न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंट्स फॉर 21 years नाउ, भाई अरे भाई साहब। 2003 से। ठीक है, हिमाचल में एंड काफी सालों से कर रहा हूँ टच दैट काइंड वुड, ऑफ थिंग। डैड इज 60 टुडे। उनको कोई ये नहीं, आई एम नॉट 100% that is only reasoning हाँ या supplements, but I know that I have never, and अभी मैं ये सब बोलने गुड इनफ लगा, रीजन, मैं मंगवा but रहा हूँ सारे। never seen him never seen him even get a fever in my life of last 20 मैं हाँ। अपने years. भाई मैं अपने च्यवनप्राश बच्चे खा के के बारे नहीं में हुआ था बोलूँ। मुझे, मैंने च्यवनप्राश खाया था एक पूरा सीजन भाई, मेरे को कोल्ड नहीं हुआ पूरे अमिताभ वाला। हाँ, हम्म। डाबर वाला ही, अमिताभ वाला ही, हाँ। बस अमिताभ सही। बच्चन। तो मैं तो सिर्फ 4 ही सप्लीमेंट लेता हूँ, पापा के तो कुछ 12 होते हैं दिन में। दवाइयाँ गाइस भी मैं होगी। कोई सप्लीमेंट नहीं नहीं लेती नहीं, हूँ, सिर्फ मुझे खांसी सप्लीमेंट, सर्दी दवाई नहीं। बुखार कुछ नहीं होता। तो लकी आप हो। Maybe it's the हाँ, shitty वो gene. डिपेंड भी करता है कि तुम। मैं तो नहीं हूँ, मेरे को तो कल ही हुआ है। मैं तो हमेशा होते रहता है मेरे एकलव्य अंकल लेना से कभी पड़ता है। चाटा पड़ा है? क्या हाँ, मतलब लेकिन पापा तुम्हें नहीं, क्या मम्मी सप्लीमेंट मारते नहीं हैं, लेने पापा अपने नहीं हाँ लेते। मम्मी और मारती है। एक पापा लड़के के लेने? पापा बहुत, मेरे पापा, अरे आई मेरे जस्ट पापा यहाँ वांटेड पे टू आएंगे ना तो आप लोग गेस मेरे कि को वो किस कम्युनिटी से निकाल के फोर्स उनको से दे आता है पाएंगे। सप्लीमेंट वाले का चाटा, तो जैसे मम्मी बहुत भाई मारी, अगर मम्मी ने तो क्या लकड़ी का वो जो खाने का ये वो तोड़ दिया है। बेलन बेलन तोड़ दिया। बेलन 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 हाथ हाँ तोड़ हाँ, दिया सेम मेरा है। मेरा सेम प्लस सेम बेलन पॉइंट। तोड़ दिया? बेलन तोड़ दिया, यार सेम वो क्या सेम खाती सेम है? स्टोरी है मेरे से। बेलन तोड़ दिया। मेरा नंदी टूटा तो पूछती नहीं है था वो पर वो मार क्या खाया मैंने। खाती उन्होंने है। उन्होंने तब मारा था जब मैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में था, तो बाय दैट टाइम शी डिड रियलाइज नंदनी आपके आई ये आल्सो हैव बेलन भी नहीं गॉटन। पड़ा, ये क्या क्या फेक शिट्टी भाई जिंदगी जी कैसी रहे हो कैसी आप। शिट्टी वहां पे है? क्वेश्चन ही सही था नंदी का, वो क्या खाती है ये बताओ अरे पहले तो। लड़कियों को थोड़ी बेलन मारेंगे। हाँ अरे ये भाई तो को मेरी रेसिज्म है। बहन भाई को नहीं को पता होगा। पड़ती थी। हाँ, भाई बिल्कुल को बिल्कुल। पड़ता होगा ना ये नंदिनी भाई। नहीं नहीं, इस मामले में मेरे मेरे माँ बाप ने कोई भेदभाव नहीं करा। मार दोनों को सेम सेम पड़ी है। मम्मी ने तो बहुत मारा है, बट आई एम थैंकफुल मारा है, इसलिए मैं जिधर ट्रू ट्रू अपना ट्रू। बचाऊं, अपना बचाऊं।
Ron is a अगर therapy थोड़ा session सा हो रहा अगर थोड़ा सा टाइम है तो कैन वी टॉक अबाउट मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें, क्योंकि एंड द ओनली रीजन आई एम आस्किंग इज क्योंकि अगेन लिविंग इन अ रूरल एरिया मिल्क हैज ऑलवेज बीन वेरी 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 बिग पार्ट ऑफ डाइट, चाहे वो घी है, चाहे वो दही है, चाहे वो दूध है, चाहे और वो चाय भी, चाय इज ऑल्सो बट 70% मिल्क ओनली। तो मतलब बट इन द रिसेंट इयर्स हैव सीन कि काफी एंटाई डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मिल्क, चाहे वो ब्लोटिंग का रीजन है, चाहे वो वट एवर रीजन, इज इट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिल्क हैज, क्योंकि देखिए हमने क्या शुरू से सुना है कि पहलवान दूध पीते हैं, है ना, ये मतलब कि यू गो इनटू रूरल पंजाब, यू गो इनटू रूरल हरियाणा, हरियाणा, यू मिल्क का कंजम्पशन बहुत हैवी है। है, हरियाणा, nice. राइट। तो नाइस, मतलब नाइस। कि साहिवाल गाय और वहाँ की ऐसे 2-2 लाख की गाय मिल रही है, मतलब कि इट्स स्टिल अ बिग बिग पार्ट ऑफ डाइट। तो ये व्हाट इज द मॉडर्न मिल्क का सिचुएशन की वाई एवरीवन इज एंटी, यहाँ हमें ऑल्टरनेटिव मिल्क, ये बादाम दूध पीना है या ये, तो क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैंने लाइक कर्ड इटसेल्फ, कोई भी सब्जी चलेगी बट आई नीड कर्ड विद इट, ऐसा हो गया है, मतलब कि होना चाहिए वो, है ना। क्या भी थिंग दूध है। में बहुत ज्यादा नहीं पीता, लेकिन तो मतलब कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड इज इट की जो प्रोसेस मिल्क है वो सही नहीं है, और अगर आपके घर में गाय भैंस है तो वो ओके है, या व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दैट? तो मुझे जितना पता है कि स्टार्टिंग में बचपन से हम ये सुनते हैं मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट हम्म फूड, ये हम्म स्टेटमेंट हम्म बोली जाती थी। बट हाँ, अभी रिसेंटली एंड इट इज सो इनग्रेन कि बचपन से हमें वो 2 ग्लास दूध, एक सुबह का एक शाम का, तो अभी भी चलता है मतलब घर पे। बट हाँ, मेरी मदर भी अभी बता रही थी कि वो जैसे अब आते रहते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड ऑल दैट, हम्म देयर इज दिस थिंग गोइंग ऑन नाउ की रिसर्च की मिल्क इज नॉट रियली that much of a complete food anymore. It's not that great. मुझे रीजन नहीं पता है। बट कमिंग टू, अगर मैं एक चीज बोलता हूँ पनीर की, जो अगर मैं बात करूँ ना, हम्म तो स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च की थी कि मैं लोगों से पूछा था कि यार प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मुझे, तो लोगों ने बोला था कि पनीर, स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस के लिए पनीर इज अ गुड सोर्स सोर्स ऑफ फॉर प्रोटीन, हाँ। प्रोटीन, बट उसमें फैट भी आएगा। वो प्रॉब्लम हम्म। उसकी ये है तभी वेप। तो आपका जो ये वेप प्रोटीन पाउडर होता है, वो पता है बेसिकली क्या होता है? आपका जो ये पनीर का जो पानी, जो वो वो सुखाते पनीर हैं। में जो सुखाते हैं, वो होता है वे प्रोटीन पाउडर की, जो ये डब्बे बेच रहे हैं ये लोग। तो ये एग्जैक्टली बेसिकली वो है। बट हाँ, अदरवाइज आई नो कि पनीर कैन बी यूज अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो और फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। पनीर इज स्टिल यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन बाय वेजिटेरियंस। इट इज गुड। नॉट इट इनफ इज, दो। हाँ, नॉट मतलब इनफ। आप कितना खा लोगे? प्रॉब्लम इज वो 30 ना ग्राम्स कि, के लिए तुम्हें आई हाँ, थिंक आधा किलो पनीर खाना वही पड़ेगा। वो प्रॉब्लम वो है। बट मिल्क का मैंने सुना है कि नैरेटिव चेंज हुआ है नहीं, फ्रॉम 100% वेस्ट में तो कंप्लीट। बहुत ज्यादा, अपने तो अभी भी चलो फिर भी ठीक है, वेस्ट में तो वेरी एंटाई मिल्क, एंड अगेन आई डोंट नो विच मिल्क इज बैड, क्योंकि मिल्क का ये बताऊं मैं, मेरा रीडिंग क्या है हम्म उसमें। हम्म फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड इज humans in general get lactose intolerant as we get older, just ओके cause we are because तुम माँ का दूध पीते हो and after like 10 15 till 15 you need some sort of milk or the other, but after 15 or 20 like you start to wean off, digestion ही change होता है अपना, in general digestion change होता है body का। तो older people are not able to digest milk Because just those because enzymes are not are not the present, which breaks yeah, down, which breaks milk down in our they decrease gut. with age. Yeah. Yeah. So just because we are used to it, we don't feel it. But in general, everyone is in a constant state of bloating because of uh, दिन में चार time का चाय. Uh, but that's the study of it. We are used to drinking milk. I'm that's why वो feel नहीं होता, and I personally have stopped drinking direct milk and chai. Milk I don't drink. I have all the other kind of dairy products like paneer, cheese, ghee, butter. कीटो में वो सब चलता है मेरा, वो encourage ही होता है, हाँ, हाई फैट वाले डाइट में। So I don't have any problems. I don't have any bloating issues when I have all that.
बट पर्सनली जब भी मैं मिल्क से दूध होता है। चाय मिल्क से 100% हमेशा होता है मुझे। और उसमें शुगर्स भी डिजोल्व, इट्स एन इमल्शन ना, फैट और इसका फैट और दूध पानी का इमल्शन है ना, there's water in it, fat in it, sugar dissolved in it, well, natural sugar but sugar dissolved in it, तो it's an emulsion। और जो भी ये दही पनीर कर्ड, all of these cheese, all of these are processes which of removing break down the sugar or certain elements जिससे वो process होता है। So those are good for your guts apparently, but milk is not। okay और ये इसका जो है soy milk, almond milk, वो सब है, they for people who are lactose intolerant, it's better for them to have that than straight milk। बट पता नहीं उसमें वीगन एजेंडा भी आता है, उसमें नहीं पढ़ना चाहता मैं, लाइक आई हैव दिस टेस्ट। हाँ, vegan agenda definitely है because those industries want to thrive, so they will make dairy the villain. But one thing that I have read is that, like Sumit was saying, कि it's not that you shouldn't consume it at all. In small quantities it's okay. And जैसे when our parents were growing up, getting good quality milk was very expensive क्योंकि आपको राशन करके देते थे। सो इट बिकेम लाइक अ बिग डील एंड उस टाइम पे वो लोग दूध कम पानी ज्यादा डालते थे उनके चाय में वगैरह। सो थ्रू द years that changed because milk was more accessible to everybody, so then they started consuming it मिल्क even हैवी। more than before. हाँ, तो so it wasn't something that was a part of the diet all the time. It has happened over the years. So I think the idea is to remember that it can be part of your diet, but don't make it your diet. मतलब don't make it sort of क्या बोलते हैं overtake your yeah. सो ऐसा नहीं कि आप मतलब आप चाय कम कर दो। एंड आई मीन ऑल्दो दही इज कंसिडर्ड गुड फॉर डाइजेशन एंड ऑल दैट, उसमें भी पीपल से दैट डोंट ओवर डू इट। इतना भी मत खाओ। ट्राई टू गेट क्या बोलते हैं लैक्टोबैसिलाइन अदर वेज, और ट्राई टू बट ईट fermented foods so that you know whatever you don't get good bacteria you don't get from other foods। मतलब अगर आपको कर्ड नहीं खाना है तो you eat other fermented foods, like you eat pickled vegetables, those kinds of things, जैसे गाजर एंड अनियन वगैरह हम खाते हैं ना, जो सिरके वाले प्याज एंड ऑल दैट, सो दैट इज इवन सपोज्ड टू बी गुड फॉर डाइजेशन। इवन दही में वो दही टंगा दो ना, लाइक फॉर मैं पर्सनली से ही बोल रहा हूँ, rather than eating straight dahi, if I have hunkered, like अपनी टंगा के रखिए, it feels much better for me, like I like the taste also and okay my gut agrees with it more। बट हाँ दिलजीत जी, आप जैसे बोल रहे थे ना कि प्योरिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर श्योर, because okay over time, just to produce more and more milk products, um, there have been a few cases, इसमें बिल्कुल डिटेल में I haven't found information, but there have been cases where they have tried to add a lot of additives to milk to either make it last longer or to make it look जैसे make the quantity look more. So there have been cases of them adding things to it. So not being sure of the quality of milk is also a problem, definitely. okay but there's But also can I? वो भी है ना कि कच्चा दूध पियोगे तो गांव में तो बोलते हैं कच्चा दूध पियोगे अच्छा है, बट then you get lactobacillus, ये not lactobacillus, there's some salmonella adjacent things Yeah, that because it's that not pasteurized. Yeah, it's not correct. pasteurized, वो भी होता है। But I was saying कि वो that this guy is there right, food farmer, वो जो वो बंदा वो इन्फ्लुएंसर, और भाई उसके तो ऐसे देख के लगता है कुछ भी नहीं खा सकते यार इंडिया में तो, मतलब लाइक शुगर सब सब में ही होता है अपने प्रोसेस
मैं एक ऑफिस में काम करता था 3 साल, तो उधर देयर वाज वी यूज्ड टू गेट हेल्दी फूड। हाँ, तो हम ओट्स मैगी लाएंगे, तो व्हीट मैगी लाएंगे। वो तब मैगी बैन हुआ था, तो हम 12 ग्रेन ब्रेड, पतंजलि की लाते थे हम, मल्टीग्रेन मैगी। और मल्टीग्रेन फिर ब्रेड भी और फिर एक आजकल मैं खा रहा हूँ। क्रैकर्स आते थे, पता है वो क्रैक्स थे वो तो, ये नहीं, सॉरी। The क्रैक्स Britannia थे, crackers, क्रैकर्स। ब्रिटानिया का था। क्रैकर्स ही होते थे, square वाला, स्क्वायर हाँ। वाला होल था हाँ उसमें। हाँ हाँ। वो तो मतलब अरे फुल ब्लैंड मजा टेस्ट आया। था वो, इतना हाँ। एडिक्टिव था ना, और उसको ब्रांड किया था एज अ हेल्दी, तो ऐसे जिसको भी Oh हेल्दी my ब्रांड किया था। God. और इतना Yeah. शुगर होता था उसमें। ग्रीन कलर का हाँ, 3 पैकेट खत्म करता पैकेट। था मैं दिन का, नहीं, भाई। बट हम लोग भी कितना अच्छा है ना, जैसे हेल्दी अगर लिखा है तो हम कितना आराम से हाँ, चेक नहीं हेल्दी, मतलब अरे ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, हाँ, फार्म फ्रेश। जीरो मतलब ट्रांस अगर अरे टेस्ट फैट। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है तो हम लोग आज लिखा तो है, ठीक ही हाँ। होगा। the मतलब most एकदम। annoying thing was मैं घर पे बैठ के रिसर्च कर रही हूँ and I'm trying to make the healthiest cookie with less हम्म। sugar and all that. मेरे पापा बाहर जा रहे हैं, he is going to the supermarket picking up these so-called healthy biscuits and I'm showing him the ingredients at the back. He's like, पर मैंने ad देखा था बेटा। He's trying to convince me, and I'm like, इसमें रागी डाल के मैंने बनाया है, please eat this. He's like, इसमें भी रागी है, and उसमें first ingredient तो is refined flour हम लोग को and जो palm oil and हम लोग को जो रागी बता होता है इतना सा उसमें, नाम के लिए, हाँ, और लिखते इतना बोल्ड। हाँ, exactly. I'm like, मैं पागल हूँ जो बैठ के बना रही हूँ। करेक्ट, ब्लैक एंड वो व्हाइट जो लिस्ट। स्क्रिप्चर मेंटालिटी है ना, कि यार मतलब ये वो तो जब, लिखा है रिटर्न वर्ड है तो सही हाँ होगा, यार नहीं। तो वो तो मैं भी छाप हम्म, सकता हूँ ना, ऐसा वाला है। हाँ, ट्रू। वो अब हाँ, वो it's ना। like जैसे he is using the same logic to buy a deodorant, कि हाँ, अरे करेक्ट। इसके एड में तो शाहरुख खान आया था, and then he'll use the same logic while buying biscuits. हाँ, थैंक तो यू फॉर कुकिंग, याद आ रही है मुझे। पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब जैसे उनको ना ये व्हाट्सएप पे जो ग्राफिक्स आते हैं ना वो भी बहुत जैजी लगते हैं, तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि ये मैं अभी अभी बाजू में बैठ के बना देता हूँ, बना तो दो। आप खा लोगे क्या। उनको लगता है यार ये ये भी एक बिजनेस शुरू करे, ऐसे एक व्हाट्सएप स्प्रेड करने का, कुछ हाँ हाँ, अपने तो ही अपने एजेंडा को चलाते हैं। लोगों ने तो चालू कर ही दिया है, मतलब किसी भी चीज को बढ़िया बना दो, और पेरेंट्स को एक बार रिटर्न वर्ड दिख जाता है ना, भले वो व्हाट्सएप पे हो, फिर वो मतलब वायरल हो जाता है। तो कीवर्ड यूनेस्को। या नंदिनी का उल्टा हो रहा है। बचपन में होता था, होटल में जाते थे तो मम्मी बोलती ये तो मैं घर में बनाती हूँ, अब घर में बना के दे रही हाँ। है, तो पापा पैकेट ला रहे सामने। यहाँ यहाँ लिटरली घर की We have मुर्गी this दाल at home. बराबर है। अरे सच्ची सच्ची, he's putting Nutri Choice in my face हाँ, and न्यूट्री my चॉइस ही था, my न्यूट्री चॉइस के हाँ, क्रैकर्स। हाँ हाँ वही, हाँ। my mom and I are like भाड़ में जाओ, and then he look at our biscuits and इसमें ना चीनी है, and I'm like, oh wow, जो आप खा रहे हो उसमें तो है ही नहीं। नहीं, और वो नाम ऑल्सो भी वो लोग ने न्यूट्री चॉइस रखा है ना, इट्स योर चॉइस टू करेक्ट, ईट न्यूट्रिशनल। ऑल्सो हाँ, ये and जो इन लोग का फैंटेसी रहता है ना कि मतलब इन जनरल ऑल्सो फूड के अलावा इनको ये जो लगता है कि कॉर्पोरेट्स रियली गिव अ शिट बिफोर मेकिंग समथिंग या अबाउट, या और मतलब घर वालों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि आप डिस्ट्रस्ट के पोजीशन से ही स्टार्ट करना चाहिए ना, मतलब बट हाँ। ट्रस्ट के पोजीशन से, सेंटर से स्टार्ट करते हैं कि नहीं यार उन्होंने बोला है, मतलब वो लाइक। तो अपना ये मेंटालिटी है ना कि बड़े कॉन्ग्लोमेरेट को ट्रस्ट करेंगे, हाँ, लेकिन करेक्ट, छोटे बड़े इसको कॉन्ग्लोमेरेट नहीं। मतलब ऐसे थोड़ी, मतलब दे अज्यूम कि 15 चेक हुए होंगे, अरे हाँ हाँ कैसे, हाँ। इतना पैसे के बाद चेक करवाना पड़े तो पैसे का क्या मतलब है ना। तो और जैसे वो जो मैगी की बात हो रही थी, वो मुझे तो लगता है पतंजलि को आगे लाने के लिए था, कि मतलब फॉर सम टाइम एटलीस्ट यू आर यूज टू पतंजलि मैगी, एंड देन सम पीपल डिडंट गो बैक ना, कि नहीं नहीं यही सही। हाँ, मार्केट पेनिट्रेट हो गया, या हाँ, मार्केट मार्केट, पेनिट्रेट हो गया। हाँ इट केम मार्केट, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर भाई। मैगी जब वापस आई है, कुछ चेंज थोड़ा ना उन्होंने किया है, कुछ भी हाँ नहीं हाँ, किया है भाई। हम अभी भी खा रहे हम अभी भी खा रहे हैं, तो, हैं। तो मेटल तो खाना चाहिए ना, सुमित ने बताया था तो मैं लेट तो खाना चाहिए। लेट तो खाना। अरे यार कुछ व्हेन आई स्टार्टेड बेकिंग ना, तो मेन थिंग वाज कि आई मेक फॉर यू नो किड्स, बिकॉज there was a lot उस टाइम पे, none of these cookies existed, the millets, और millets का तो लोगों को पता भी नहीं था, they were like what is ragi. So I was making ragi cookies and brownies and all that, and um,
उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता था इन वॉट एवर यू वर ईटिंग। तो मैं उसमें कोको पाउडर डाल देती थी, सो दे वुडंट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या है। बट द प्रॉब्लम वाज पेरेंट्स वर लाइक, अच्छा ये एक पैकेट दिन में खा लेगा तो इट्स ओके ना। आई एम लाइक, नो इट्स नॉट ओके डूड, इसमें चीनी है। नशे ही तो करवाओ। इट इज, हाँ यार, आई एम लाइक इट इज हेल्दी बट प्लीज डोंट मेक इट सच अ हॉरिबल थिंग, ऑल्सो हैव इट ऑल्सो। एंड आई एम लाइक, हर हफ्ते तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मेरे लिए अच्छा है बट तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। करेक्ट। वो तो कॉम्प्लान भी हेल्दी था एक टाइम पे, हाँ। मिलेक्स भी हेल्दी था, हाँ, बढ़ते बच्चों के लिए। पढ़ते भाई बच्चों के लिए। अभी भी है ही, कितने ही लोगों को पता है, अभी भी मेरे पापा को बहुत है जिड। उनके मॉम ने हर दिन कॉम्प्लान पिलाया है। भाई मैं प्रोटीन एक्स पे पढ़ा हुआ वो 5, उसका और मॉम का आईडी सेम है, 567 हूँ। डैड। डैड का वही जोक रहता है, मेरी माँ ने मेरे को एंटा कॉम्प्लान हॉर्लिक्स पिलाने ऐड। दिया था। पापा का ऐड शूट करो, ये देखो हॉर्लिक वाले बच्चे। अरे डैड मेरी मॉम तो रिग्रेट करती है, डैड कॉम्प्लान डैड को कॉम्प्लान ऐसा पिलाना बिठा बोल के रही मैं थी। बात कराऊंगा ना, वो तो कंटे सिर्फ जोक पे जोक ही मारते रहते हैं ये सब चीज को लेके, कि उनके लाइफ में क्या क्या सब से फालतू चीज के साथ उनका मिलाप हो। हाँ हाँ, तो अभी अब वही ना, मतलब मार्केटिंग के प्रेज तो सबसे पहले ये लोग हैं, और मतलब बहुत अच्छे से, बिकॉज वही ना, कुछ भी स्पोकन वर्ड और रिटर्न वर्ड अगर कॉन्फिडेंस से बोल दो इनके सामने, तो वो हम्म। क्वेश्चन नहीं होता है। मान लेंगे, हाँ। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, मतलब इंडिया में इन जनरल ना, मतलब वो एज बिस्वा सेज, इंडिया में ऑप्टिमिज्म बिकता है, वो बहुत सही बात है। तो हाँ यार, किसी का व्हाट्सएप पढ़ लिया एंड इट्स सम रिलेटेड पर्सन क्यों हु इज हुआ ओल्डर आपको? देन डैड आल्सो। हाँ सो बस, उन्होंने बोल दिया कि सुबह उठ के यू हैव टू ईट गार्लिक। तो आई एम लाइक, आप खा रहे हो लहसुन, आप खा रहे हो सफर, हम कर रहे हैं। यार एक्चुअली इसमें एक और चीज है, दिस इज एक्चुअली बेसिकली यू वर लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन, जैसे हमारे साथ भी होता है। Yeah. अगर आपको कल जाके आप कुछ करते हो और इंटरनेट पे दिख जाए कि ये चीज वेट लॉस के लिए सही है, सही है, आपको सडनली मजा ही आ वैलिडेशन गया। मिल जाएगी, भाई मैं सही कर रहा हूँ कुछ जो कर रहा हूँ। एंड तो हाँ उसी पे एक्चुअली वो प्रे कर रहे हैं एंड बेसिकली। एक्चुअली आपका अभी इंस्टाग्राम और ट्विटर इतना ये हो गया ना, इको चेम्बर हो गया ना, तो आप सुनने वाला। जो आप सुनना चाहते हो और ढूंढना चाहते हो वही चीज आपको वो दिखाता रहता करेक्ट। जैक डैनियल्स इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ, ये वाले आर्टिकल आर है। बेस्ट। रोज नया जेडी फॉरवर्ड जेडी आएगा, करती, रोज मैं आके, आपसे जेडी हुई। जेडी। रोज नया फॉरवर्ड आएगा एंड रोज आई विल सी माई डैड गोइंग विद द मोबाइल फोन टू द किचन टू शो माई मॉम फॉर द प्रूफ कि इसमें लिखा है कि मुझे ये खाना है। तो मैं प्रूफ। आपको दो मैं अरे लाइक रोज अच्छा। नए कुछ ना कुछ तो भिगो के रखते हैं रात को, सुबह फूल के वो हाँ, खाते हैं फिर oh my कुछ ना। God, this is exact. अरे वो It is so irritating. अच्छा And you वो know आप what happened? The most irritating thing I'll tell you. हाँ, किसी ने तो बोल दिया, एक अंकल ने, कि he saw a lot of improvement in his cholesterol levels plus weight loss and all that, अगर वो सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी रहे हैं। ठीक आ, है, तो mom's like, तू भी शुरू कर दे। And then mom dad are both having it, and I'm like, why are you doing this blindly? Ask somebody first. She's like, nahi 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 nahi. After a month dad started complaining कि उनको दांतों और गम्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली, हाँ, He ये है। went to the dentist, ठीक है, and the dentist is like, what happened and all that. He's like, everything looks fine. I don't know what you're talking about. Dad comes home, इस dentist को कुछ नहीं आता यार, and all that. And then I'm telling them कि ये लाइम जूस की वजह से हो रहा है, and they started laughing at me. And and then all of us sort of read about it and realize कि वही है, you shouldn't have direct ऐसे लाइम जूस। रॉ से पीना। हाँ, स्ट्रॉ से पीना चाहिए अगर पीना भी है तो। एंड प्लस इतना भी मत पियो यार, कि मतलब व्हाट दे वर डूइंग इज कि इट वाज नॉट लाइक नींबू पानी, इट वाज barely एनी पानी एंड ढेर सारा नींबू। इट भाई वाज नींबू नींबू। यार एक्सेस ऑफ हाँ, एनीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग। आप ज्यादा पानी पियोगे दैट इज आल्सो बैड। मतलब आप दिन में अगर बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो तो उससे वो हो जाता है हाँ, ना, योर ब्लड बेसिकली बिकम्स, मतलब वो
कुछ होता उससे उसको भी उस डिजीज को वाटर क्या कहते पॉइजनिंग हैं होता है, एक बंदी मरी थी कोई जगह मतलब कंपटीशन वाटर में। बॉय देयर इज आल्सो लाइक आपका मतलब देयर इज अ डिजीज उस वो मैं बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ये पानी पीना है एसिडिक चीजों का यही है कि ना, स्ट्रॉस, इट्स ओके टू टू हम्म हैव इट इन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बिकॉज अपना बॉडी जनरली बेसिक होता है अंदर का, सो टू न्यूट्रलाइज इट, टू हैव एस ये कौन सा एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर नॉट विनेगर। हम्म एप्पल साइडर विनेगर इज बेटर देन नींबू, और हम्म वो भी स्ट्रॉ से। दांत खराब होते हैं उससे अगर डायरेक्ट से हाँ, पियो। इतना खराब होता है तो आई वाज सेइंग कि ब्लाइंडली प्लीज डोंट फॉलो दिस, पूछ लो किसी से, बिकॉज अगेन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट गट एंड ऑल ना, कि स्टमक एंड ऑल, यू नेवर नो, इट मे वर्क फॉर यू, इट मे या नॉट वर्क। इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन, तो हाँ ट्राई करके ही हम्म। पता चलता है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। और खुद, और जो खा रहे हैं वो स्टॉप करके भी पता चलता है कि अरे इससे प्रॉब्लम हो रहा था क्या मेरे को। करेक्ट ट्रू ट्रू। करेक्ट तो नहीं बट भाई, हमें ये सब करना चाहिए यार और मैं तो ये सोच रहा हूँ लाइक जैसे आज हमने सिर्फ वेट पे बात किया लाइक इन जनरल किसी दिन आई डोंट नो स्किन रूटीन्स हेयर एवरीथिंग मतलब या बात नहीं भी तो द ग्रुप विच शुड नॉट बी नेम हैड स्टार्टेड अ ग्रुप उसके अंदर वेलनेस एंड ऑल तो लाइक वी कैन स्टार्ट सेपरेट अपने वाले में हेल्थ वेलनेस करके कुछ जिसमें वी कैन शेयर कुछ भी मतलब ऐसी वाली चीजें अगले महीने बालों पे कर लो एक, चलेगा? बालों पे तो कर ही लो, उस पे तो कौन बहुत पढ़ के आएगा? नंदनी आप करो स्टडी, हमें स्किन बताना। स्किन रूटीन पे कर लो भाई किसके अच्छा बहुत किसके 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 सबसे बेस्ट बाल हैं अपने अपने यहाँ किसके घने बाल हैं? छवि, अभी मतलब कलर करने का अगर रिस्क ले रहे हो। हाँ वो यंग भी है ना, उठा उसको, नींद से 22-23 उठा में मैं उसको, भी बुला रिस्क ले वापस। सकता था ना। हाँ वो भी है, लेकिन लड़के कलर करते तो बहुत छपरी लगता है। नहीं, करने तो कर लो यार, पर वो वो ब्लॉन्ड मत कराओ बस, अरे वो बहुत हमारा अजीब लगता है। रुको रुको, स्ट्रीक्स अनमोल हमारा ये कंक्लूड कर दे तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। अरे कंक्लूड भाई हाँ, इसमें अब अनमोल भाई। कंक्लूड क्या करे बोल ले बट कुछ। अच्छा ठीक नहीं, है but before you conclude, हाँ I just want to say कि Anmol has been an awesome host, awesome Yeah. moderator. The way he managed I was so impressed. He would let everyone talk and then make notes. I don't know when he was making notes, but then he would, reiterate everything, gave everyone a chance to speak. So really, really amazing session. Thank you for doing this, Anmol. एंड थैंक बहुत यू थैंक मस्त यू थैंक यू टॉपिक, बहुत अनमोल। मस्त टॉपिक चूज किया अनमोल भाई। Yeah. Yeah. आई लव्ड हाउ बीच यू, में सेंटी भी हुए लोग। हाँ हाँ अरे मैं कंक्लूजन में ये बोल रहा हूँ व्हाट आई टॉपिक लव्ड अच्छा इज दैट people shared openly. Okay, they did not hold back. I mean, it was a pseudo therapy session for some people, and I mean, मेरे लिए personally ये था कि now I even like I know कि ये safe space है. I can share. I have told things today, or I know people here have told things which have been personal to them. Right? They were very open about sharing that, like sharing कि हाँ ये weight था भाई ये था this happened this bullying happened which generally you don't tend to talk about. So, I mean, that itself is a great opportunity. Got to learn so much. Ki, what is, things that are out there, like what works, what doesn't work. There are people who have tried it. You can learn from their experiences. But as everyone said, you need to find like, it is different for everybody. Don't blindly follow anyone. Like whatsoever, my conclusions from today will be whatsoever you heard, it is good you heard these things, but do your own research. Mm-hmm. Go visit a specialist if possible. I mean, even looking for that right specialist is important. Finding your own journey, right? Not setting unrealistic goals. This is a continuous process. It should not be like you want fast results or shortcuts. Like it should be continuous. The Kaizen method was this a continuous improvement that should happen is what I would say. And at the end of the day, I think diet is what I heard is exercise is important. Exercise that it's not necessary that you need to do weight training, you need to hit the gym. Mm-hmm. Find what works for you. Even if you have constraints, like for example, Vishweshji said, he has certain health constraints and everything.
work around those constraints, but I think diet will be the one thing that is something in your hands and you can work around. So all I would say, it was really great, and I think we should keep on having these conversations. I think we had never talked about this. People were sharing their stories and accountability buddies or thing. But like how Nani shared, right? She's still trying to figure out, how to deal with it. Or Eklavya having that clarity in December is now like he had that pivotal moment. So having these conversations help, and I would say like we should continue doing that as a group, and not only about this 100%. but about other things also. Like today, we focused more about physical health, but we had touched upon aspects of mental health, people talking about going to therapists. We should talk about therapy. I mean, there is a lot of taboo around that. And also how to avoid, like, even if you encounter a bad therapist, don't give up on therapy. It is about Yeah. the therapy as a concept should not be given up, even if you encountered a bad person, therapist. So we should talk about those things. And I think one thing that Nandini brought about, we don't realize, but there is a lot of stress in our lives which we don't even realize. And stress is one of the biggest things to cause a lot of diseases. Like I know people who have got cancer because of it, and like so, because you don't realize there's underlying stress in your life about a lot of things. So I think conversations in these groups help relieve those stress. Like when you have somebody to talk to, so it need not be therapist. Even talking to someone you're close to in this group might help. So thank you everyone for sharing. I mean, Must, people shared their personal stories, so thank you so much. must. Lovely. बेस्ट नाइस कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि कंक्लूड करना हो तो कंक्लूजन के नाम तो ये कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन के कंक्लूजन को कंक्लूड मेरे को भी मार डबल मार कंक्लूड दो, अब कंक्लूड दो.